Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. Or yes, of course, yeah, it is a blues channel in terms of the fan that I am. लेकिन आज तो यार बनता है, to kind of celebrate the night that we had कल रात को. और मैं सोचा यार, let me just actually not do a video and come out मेरे views के साथ. It won't be fair भाई. हाँ, मेरे views तो definitely होंगे because we were the reigning champions. लेकिन more importantly, we need to get Real Madrid fans and Liverpool fans in the house. Or yes, we'll be having Real Madrid fans and Liverpool fans in the house. But before that, let me big up few people जो है chat में. Matata United. Okay, that is for the poll, I believe. Matata United. And yes, all the best for next season, of course. It's a tough kind of a transition period for Manchester United. I can understand. Like, a lot of clubs are going through that. Talk about transition, yeah. Real Madrid was in a transition. How do you feel, Real Madrid fans? Anyone in the chat, please boliye. Or yes, we will be adding Real Madrid fans as well in just 2 minutes onto the panel. लेकिन हाँ, please start the stream with the weird offside rule. हाँ, हम वो cover करेंगे. We'll cover bit by bit जो भी है. We'll certainly cover. और Haaland is the final piece of the jigsaw. देखते हैं, City can do it next season or not. Let's see. And yes, of course. Big up to Shrey, thank you भाई ज्वाइन करने के लिए. और होप साला कम टू रियल मैड्रिड नाउ. मीनो इज लाइक ओके, अभी यार वही है विजुअल थिंकिंग. मिस्टर चेल्सी सब ठीक है, अभी तो बढ़िया है. अभी के लिए रियलाइजेशन नहीं हुई कि यार वी आर नो लॉन्गर चैंपियंस ऑफ यूरोप. नॉट येट, इट इज नॉट हिट अस. लेकिन हाँ, हाला मैड्रिड हिमशिखर. वेल एब्सोल्युटली यार, कांग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड फैन. निखिल ऑफ कोर्स भाई, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ. आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग. व्हेन सीजन स्टार्टेड इन द मिडिल, when it became a thing, like maybe the 3 to 4 years still Liverpool and City will dominate, Madrid rose. I think it's about Spanish football as well, Nikhil. You can say that. And yes, hit the like button like Shrey says. Siam in the house. And Aritra as well. Aritra, yes, absolutely. By respect, Barca fan, giving big ups to Courtois or talking about Real Madrid, definitely ले जाते हैं भाई. मतलब come on, Vedant and Sooryansh from Madrid pundits. भाई लोग, first of all, as you can probably figure out, या दोनों की तबीयत थोड़ी सी नाजुक है. हैंगओवर इफेक्ट, I'm guessing pretty much. लेकिन यार congratulations again, yet another time. और as in when मैं ज्यादा बोल रहा हूँ इसके बारे में. भैया you also had an hangover, ठीक है. आप लोगों का भी चला होगा because after so many long, मतलब such a long time ना, you had a very good news which I felt कि मेरे जो Chelsea fans है ना, मतलब दोस्त है जो Chelsea fans है, उनके लिए बहुत अच्छा था. टेड बोली taking over finally. It took very long. अगर वो अब नहीं होता ना, तो कुछ ये भी हो सकता था कि प्रीमियर लीग वाला इशू आता. तो आई एम लाइक वेरी हैप्पी ऑन दैट फैक्ट. मतलब कांग्रेचुलेशंस भैया उसके लिए. तो फर्स्ट अरे यार, थैंक्स. मतलब इट इज अ बिग काइंड ऑफ एक रिलीफ है ऑलमोस्ट, आई वुड से. यस, फॉर्मर चैंपियंस ऑफ यूरोप. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, आई नो रियल मैड्रिड ने ही एलिमिनेट की थी चेल्सी को भी इस सीजन. लेकिन इन अ स्ट्रेंज वे, अगेन मैं तो पहले बोल चुका ऑलरेडी यार, नथिंग अगेंस्ट लिवरपूल, नथिंग अगेंस्ट लिवरपूल फैंस. आई थिंक उनका सीजन भी फिनोमिनल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. बट एट द एंड ऑफ द डे, लूजिंग टू अ विनर, एज इन इट्स लिटरली पासिंग द बैटन बोलते हैं ना, वी आर लिटरली पासिंग द क्राउन. मतलब वो हुआ है. और वही मैं शेयर करने वाला हूँ. श्रेय ने बताया ऑलरेडी, फॉर पीपल हु डू नॉट नो. हाँ, आज है 29 मई और आज ही के दिन था पिछले साल जब हमने लिफ्ट किया था ट्रॉफी. और लिटरली आज ही के दिन रियल मैड्रिड हुआ. तो थिंक अबाउट इट, दिस डे विल बी सेलिब्रेटेड बाय बोथ चेल्सी एंड रियल मैड्रिड फैंस. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. इसलिए अभी तक लिवरपूल फैंस को लाया नहीं हूं. लेट्स सी वेरी जॉय. बट मतलब अगेन टॉकिंग अबाउट N'Golo Kante as well, because just एक remembrance, क्योंकि he had that game against Real Madrid. Pretty sure Vedant and Sooryansh would remember, and all Real Madrid fans. और वही, it's a fitting kind of a tribute to N'Golo Kante because it is Real Madrid who has won. भैया you are firing shots ना, तो I'll also fire one. ठीक है. So which game are you talking about? This season की वो, हाँ, he had a very good game for Real Madrid. Last season, yeah. This season तो he was in the one of the most underwhelming kind of players 11, to be very honest. लेकिन हाँ, मतलब वही है ना, what I'm trying to say यहाँ पर है, जो Real Madrid की मैच थी, that kind of gave us a belief last year that we can win it, and now Real Madrid has won it. So it's a beautiful transition. और this was the moment, of course. This was a moment all Real Madrid fans especially, as in वो realization, मतलब till the last final whistle आता नहीं है. I don't know, Vedant, I would first start with you. क्या मतलब, what was the first feeling? How did you react to it? Amazing night. I mean, मतलब right now I'm not at home. I'm out of town. तो यहाँ पे थोड़ा सा net बराबर नहीं था. तो like at least 1.5 minute पीछे चल रही थी मेरी, and I was on TCSB का stream. तो उसने चिल्ला दिया, अरे champions.
So I just could not react to anything until I see it myself, you know. So 1.5 minutes later, I was like, you know, like I literally सबको उठा दिया मैं घर पे, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था मैं. It was a mad night, like one of the best nights. मतलब आप मैड्रिड जानते हो कि 14 चैंपियंस लीग जीत चुकी है, बट प्रोबेबली माइट बी रीसेंसी बायस, माइट बी एनीथिंग, बट ये वाली चैंपियंस लीग विन ना, it will be always remembered because Madrid have pulled out another unexplainable Champions League run. Every time we were the underdogs and we have delivered. We beat Chelsea, we beat PSG, we beat Man City, and these three were the favorites to win the Champions League once again, and Liverpool obviously. So we definitely deserved it. I like to add something ना कि एक चीज होती है which every मतलब फुटबॉल फैंस अप्रिशिएट की, जब आपका यंगस्टर जिताता है मैच, जब यंगस्टर मैच जिताता है ना, दैट लेज द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट 10 years की वो क्या होगी उस टीम की मेंटालिटी. Our youngsters gave 100%. So this is not a victory of Real Madrid per se. It's the victory of heritage we provide. It's the victory of Madridismo our club has provided. Like in your case, it was Kai Havertz. Kai Havertz wrote his name in golden letters in the book of history for Chelsea. It's Vinicius for us. Vinicius has wrote his name the first time, and inshallah more will come. I think हाँ बिल्कुल वही है, they turn from a boy to a man. This is kind of that moment आप सुपरस्टार बन जाते हो, not just for your club, what he already showed इस सीजन में, लेकिन यार मतलब इन वर्ड उसने दिखाया, और आप बोलोगे यार नहीं उसका पेस है ये है, नहीं यार मतलब हर एक गेम में किया है बंदा, लिटरली हर एक गेम में किया है. मतलब एक भी गेम याद नहीं मुझे चैंपियंस लीग में where Vinicius hasn't turned up, and talk about people who turn up, like this guy, he deserved the most to lift the trophy, like Karim Benzema, like you know really man, this guy deserves a round of applause 100%. मैं बोलता हूँ, एंड मैं खुद उनमें से था, मैं खुद हाथ उठाना चाहूंगा कि करीम बेंजेमा आफ्टर रोनाल्डो लीविंग, मैं सोच रहा था विल ही बी दैट यू नो पर्सन जो लग रहा था बहुत सालों तक, लेकिन नहीं, he has gone like you know 3 notches above. अंकित भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सेम 2018 वाली विंडो की आपसे बात करूँ ना, तो यू नो लाइक बैक देन आई वाज ऑब्वियसली यंग, आई वुडंट अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक द बैलेंस व्हिच वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस सीजन in football, you know, properly with PSG or be it with this current Madrid squad, etc., etc. You know what I was thinking is कि आपने रोनाल्डो को जाने दिया, अब आप बेंजेमा को भी जाने दो, because रोनाल्डो बेंजेमा का उस टाइम पे भी लिंक अप प्ले, I would understand that, and I would say that we should get Hazard and Lewandowski in the team. So basically that Hazard Lewandowski Bale trio 4 years back, that's what I said would happen. अब वैसे आपने एक पॉइंट और बहुत अच्छा you know mention करा, that who would have thought Real Madrid would have won. You know, this is a transition season for Real Madrid. Real Madrid ने कल ही एक बहुत बढ़िया पोस्ट निकाला, you know, that Adidas football के साथ. So it basically said, this is the place where logic does not matter, and it definitely does not matter when it comes to Real Madrid in the Champions League. Bhai, we lost our main centre back pairing. We lost the coach who'd won us everything before, 3 Champions Leagues, La Ligas, etc., etc. And we went out to win the 14th and the La Liga and the Spanish Super Cup. So massive season, man. मैं ना इधर डिसएग्री करता हूँ हर एक मैड्रिड फैन से जो कहता है ट्रांजिशन स्टेट है ये. आई एम लाइक व्हाट ट्रांजिशन स्टेट? our students, our Madrid young kids are going into the right direction. It's not transition, it's marking the beginning. It's not transition, it's the evolution to new modern age football. It's the evolution for players to come. The rebuild that has kind of already you know taken its rebuild kind of sort of a slow phase of a rebuild है basically. आप ऐसा नहीं कर रहे कि आप 4-5 स्टार्टिंग प्लेयर्स को हटा के आप नए प्लेयर्स ला रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, लेकिन आप एक दो प्लेयर्स को वो जो 2017 वाली स्टार्टिंग 11 थी उससे चेंज कर रहे हो. अभी आप probably next season you could see Kamavinga or a Chouamani as a starter probably. So वही है ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से सीमलेसली ट्रांजिशन होते हुए दिखेगा यार. पीपल यार काफी सारे क्वेश्चंस है. आई एम गोइंग टू बी टेकिंग एक क्वेश्चन यू नो आफ्टर दिस लाइव शो, और मे बी इन मिडवे आज हम बात करने वाले हैं यू नो फॉर दैट स्लाइड. लेकिन यार बिग अप टू माइकल टॉक्स फुटबॉल. माइकल ब्रो, एज इन डू डीएम मी. आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ ब्रिंग यू ऑन. आई नो दैट यू मस्ट बी रियली डिसहार्टेंड राइट नाउ, लेकिन हाँ, if you want to come on, do DM me. You're most welcome. Michael is a Liverpool fan who does content end to end on his channel. sorry. No, of course, positive banter. Michael will take it, man. As in knowing Michael, but at the same time, you know, yes, absolutely. And we'll come to basically players individual by individual. But the first important thing for me, like again, it kind of
आप बोलोगे it pains me to say it for any other club fan, but it's like almost like phenomenal to the power of 3, man. Like, how could you get 14 trophies? Like 14 trophies. Like I can't even think. मैं second trophy जब हुआ ना, वेदांत और सूर्यांश और everyone in the chat, I'm pretty sure काफी Chelsea fans ने बोला है, मैं तो रो दिया था यार. लिटरली मैं रो दिया था सेकंड ट्रॉफी में. और मुझे पता है यार, इतने सालों में हम वेट कर, इतने मुश्किल से मिलता है, इतने सारे सेमीज एंड फाइनल्स. एंड फॉर पीपल आउट देयर, रियल मैड्रिड हैव नेवर लॉस्ट द चैंपियंस लीग फाइनल पीरियड. वो एक रिकॉर्ड है. आई थिंक लाइक वेदांत सुरेश ने ऑलरेडी बोल दिया, इट्स अबाउट दैट मेंटालिटी ना, whether be it youngster or whatever, वो दिखा दिया यार. टैक्टिक्स की हम बात करेंगे डेफिनेटली, बट अगेन at the end of the day, the result is what matters. It's Champions League final, you know. And this guy, man, मतलब वो भाई साहब, मतलब you know, again back in the AC Milan days, I followed him very very closely for obvious reasons because I support AC Milan as well. लेकिन फिर Chelsea में, फिर Real Madrid में, the guy has won everything. Oh, what a year! मतलब talk about this यार, Vedant, Sooryansh, मतलब for people who have kind of, you know, started following football in the last decade especially, the fact कि यार Mourinho और Ancelotti already जीत गए हैं, you know, European trophies इस साल, और Ancelotti putting his name in folklore. I think 4 UCL trophies, the first ever, plus I think उसने 3 as a player भी जीता है. So where would you put Ancelotti in world football overall? I know that your Real Madrid fans will obviously be biased, लेकिन at the same time realistic picture भी दो. मतलब what do you think? Ancelotti, is it जैसे हम बोलते हैं यार, चेल्सी ने जीता था चैंपियंस लीग राइट लास्ट सीजन, तो इन अ स्ट्रेंज वे इट आल्सो पेपर्ड ओवर द क्रैक्स, लेकिन एंचेलोटी यू वुडंट से सो राइट. ला लीगा भी जीता आपने. नहीं, I'll say one thing भैया here ना, कि he is the best man manager. He might not be the best tactician out there, but he is the best man manager. मतलब अब I cannot compare him to the likes of Pep or Klopp in terms of his tactics, because it will be very unidimension, and it will be something like it will only include bias rather than being at correct point at that time. I'll say that he is a very good man manager because he is able to break that barrier that I cannot score in terms like players like Vinicius and Rodrigo now exhibit something which is known. The charisma they exhibit is something which a Madrid fan needs, and Madrid fan dies to watch. The endeavors they have given us in the last couple of games have clearly shown that the barrage and the barrier which has been made that I cannot score and all in case of Vinicius has been broken. For the likes of this player, Dani Ceballos. Dani Ceballos is a prime example that he was not starting in the Real Madrid lineup. He played 4 games in last La Liga matchups. He was subliminal. No one had no clue how to fucking defend him, or no one had no clue how to get the ball out of him. This man was so clean and smooth. It kind of felt like I was watching a player in his prime. And Yeah. I was talking about likes of Modric, and he was so beautiful at that time. So this management, I can say, yeah, Carlo is the number one in that. In base of tactics, I'll still say that the best tactician, in my opinion, has always been Pep Guardiola, and that's my take on it. For in case of man management, Ancelotti tops the list. बिल्कुल बिल्कुल. और यार by the way यार, एक करेक्शन यहाँ पर. हाँ, when I say that they haven't lost a final ever, I mean like after I was born. Let's put it simply put. In UCL, it's 8 ka 8. We have been to 8 As in, finals. again, for people out there who don't know, Champions League became a UEFA Champions League, I think, if I'm not wrong, around 1990, if I'm not wrong, that is what I believe. Yeah. और उसके पहले it was basically a European Cup is what we're talking. So again, European Cups में, I think it's right, the comment जो मैंने लिया था. लेकिन again, in Champions League football, which I have kind of followed a lot, you know, even in the 90s, that is where, यार मुझे तो याद नहीं एक भी final, you know, Madrid. Nikhil CR7 has just pointed out the same thing. But this is the thing we are talking about, like 14 1992, exactly. Wow, that's difference. अब वही है यार. जब मैं भी आगे एज चेल्सी फैन, मैं तो थोड़ा बहुत डालते रहूंगा चेल्सी बीच में मसाला, लेकिन फैक्ट वही है यार, इट्स अबाउट विनिंग फाइनल्स. ओ सॉरी, इतना सच नहीं बोलना था. ओ भाई गॉड, ये तो सच नहीं. रूडिगर तो ऑलरेडी छीन लिया इनसे. अरे नहीं कोई नहीं, लेकिन ये भी एक चेल्सी मैन, लेट मी टेल यू. He is a Chelsea man, but I'll say one thing, that in Chelsea, na, if I were to get 2 players to Real Madrid, na, it will be Kai Havertz and Reece James.
Now people will say साला, why और Kai ऑलरेडी Havertz? यहाँ मैं ना अप्रिशिएट कर रहा हूँ पहले ही अंकित भाई तैयारी ले ली। अंकित भाई सोच रहे हैं कि यार तुम सभी ले लो, तुम सब कुछ ले लो, नहीं, स्क्वाड ही खाली कर दो हमारी। I'll say प्लेयर्स ना, कब बन जाएंगे? बिकॉज हाँ। काय हैवर्ट्स को ना लोग पीपल अंडररेट अ लॉट। वो इतना फिजिकल है ना, वो दिखता नहीं है, वो पता कैसा है, उसकी बॉडी इज सो लैंकी ना, बट ही इज सो फिजिकल। So I like Kai Havertz a lot. मतलब in my opinion, he is like a Galactico signing if you get him. He या is या एग्जैक्टली, he is one of those few players. बिल्कुल। एंड यस अगेन लाइक वी आर स्टिल सेलिब्रेटिंग द विन। ऑब्वियसली वो बनता है भाई, मतलब हैंगओवर है जो भी है। आई थिंक फॉर रियल मैड्रिड फैन, मैं तो बोलता हूँ कल रात तक मैं बोल रहा था चैंपियंस ऑफ यूरोप, मैं तो मतलब डू इट मैन, एज इन इट्स योर ईयर, डू इट एज इन यू डोंट, मतलब मैं बोलने वाला था यू डोंट गेट इट एवरी ईयर, रियल मैड्रिड में ऑलमोस्ट यू गेट इट एवरी ईयर। 10 साल में 5 बार, इनफैक्ट कितने 9 साल में 5 9 बार। साल में। ओ भाई साहब, लुक एट दिस मैन। और यहाँ पे ये सब 5 चैंपियंस लीग जीते हैं। मतलब think about it, here even watching a Champions League final live in stadium is something of a dream of a life for me. Imagine these are all people who have actually won 5 Champions League, the people that you're seeing on screen. आप बोलोगे क्रूज नहीं है, लेकिन if I'm not wrong, क्रूज won Cruz has won it with Bayern. Bayern, Yeah. exactly. 2013. हाँ बिल्कुल 2013 he बिल्कुल। won it with Bayern. And Right. surprisingly, the thing that got me the most in the celebration was Alaba crying after winning. It clearly Exactly. showed that in 1 year what passion he has developed for the What club. passion is that? And वो इमोशन आ जाती है यार, मतलब इतना Right? इतना I'm thinking that what it's a nice. Rudiger will bring to this club. We Oh are talking my about God. a proper asshole. We have an asshole already Yeah. in our team. That is Casemiro. 2 assholes in one team, and you are like enjoying the game to the next level. Those tactical fouls will be like epic. भाई मतलब यार कोई मैड्रिड से लफड़े करने के पंगे नहीं लेगा ना, मतलब ट्राई नहीं करेगा। you've got Rudiger, you've got Casemiro, you've got Militao, you've got Alaba. मतलब These four are like in a literal strange way, monsters on the pitch. it's kind of unlike Madrid also, because Madrid obviously had those stellar names who commanded respect. ठीक है, I'm talking about the yesteryears and all that, right? अभी you're having like kind of like Sooryansh ने बोला like a set of rowdies who also play football, and they play football very well. Rudiger That's a and fact. Casemiro play. They like fighting first and then playing football. I guess their हाँ first Rudiger तो यार thing in CV na is shithousery king. I call him shithousery king directly. हाँ, मतलब shithousery that at its energy is finest. required. If you want to बिल्कुल। survive in modern football, the energy which Rudiger and Casemiro brings, na, it's an asset for the team. It's a definite asset स्पेशली for the बिग गेम्स में इट वर्क्स अ डिफरेंस। और अर्पण यार ग्रेट पॉइंट यहाँ पर मतलब मैं खुद भी बोल रहा था यूसीएल फार्मर्स लीग बन रहा है, तो कम ऑन, देयर विल बी अ पॉइंट आएंगे लोग, लेकिन अगेन यू कैन आर्ग्यू कि यार रियल मैड्रिड, लेट्स पुट इट दिस वे यार, अर्पण आप ही बोलो और एवरीवन वाचिंग, touch your heart and say, did you actually predict Real Madrid to win the Champions League this season when the season started? I did not, honestly. ठीक है, और that is the bottom line. तो आप बोल सकते हो ऑन पेपर हाँ रियल मैड्रिड जीत रही है बार बार, लेकिन यार this for me again, maybe Vedant and Sooryansh will put it differently, लेकिन मेरे लिए आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द फाइनेस्ट रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग विन एवर, एंड दैट जो मैं देखा हूं, बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और द रन दैट यू एक्चुअली बीटन, फर्स्टली यू हैड इंटर मिलान ग्रुप में, और वहां भी शिटाउसरी मिलिटाओ वाज वन, आई रिमेंबर, ठीक है, जो किया था बहुत इंपॉर्टेंट, Militao Barella. Exactly. Then, or after losing to Sheriff by their first match, okay, then you came back, you topped the group. Then finally you got in the round of 16. Obviously, the game था PSG. Then you had obviously Chelsea. Chelsea का again Modric ने बोला है. I think Ancelotti ने भी बोला है कि it was the toughest game, the one in Bernabeu. So you actually came back with that, and Man City and then Liverpool. और उसमें I think you have Italian champions, you have Premier League champions, or you have last 2 years के European champions. Simply put, मतलब last 3 years के 2 बार जो हुए थे. and और Liga के champions भी, of course PSG को कौन ही याद रखता है. Basically, हाँ, Premier League की common. top three, Serie A champions, Liga un champions. Everyone नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, but I'll banged say by Madrid. I'll say one नहीं thing यार, कि banged strong word हो गया. when Defeated by Madrid. defeated PSG ना 3-1, वो जो हम्म. second leg में comeback हुआ था, I got goosebumps. I got like idea कि इस बारी शायद it's coming back. The 14th is coming, because when you manage to pull out something out of the hat that way na, and seeing what Carlo has done, Carlo comes and he wins us the UCLs. Like it has been like next time if we get sack and he comes back, we are winning again.
like it's going to be like that way. But I'll say that it has been like a treat to watch, and I personally admire Carlo and the team a lot now. Yeah. मतलब और आदित्य, first of all, thank you for the super chat. Means a lot. आदित्य, लेकिन firstly, congratulations if you're a Madrid fan, which you probably are, I'm guessing. लेकिन यार, मैं भी अपना हाथ ऊपर करना चाहूँगा because again, as a person who watches all the top leagues, I have my priorities. मैं झूठ नहीं बोलूँगा. Like you all know, जो follow करते channel, like there is the Premier League and there is the Serie A, then La Liga for me. That is the order if you really ask me. लेकिन Wait, so La Liga में आप किसको रूट करते हो? आप सच बताना. अरे नहीं, रियल मैड्रिड मैं तो बोला हूँ बहुत बार, क्योंकि रीजन तो ठीक है. है. नहीं वो देयर इज अ रीजन. लेकिन इस खाली इस साल में क्या हुआ, आई स्टार्टेड फॉलोइंग बारसा मच मोर because of the fact that I could relate, with that young team coming up, जैसे लैम्पार्ड के अंडर हुआ था चेल्सी, right? So I kind of related. लेकिन रियल मैड्रिड, the reason being that first of all I had a lot of friends रियल मैड्रिड fans पहले, और लेकिन secondly जो kind of transfers हुए over the years, those have really been linked very hard, especially Hazard के बाद तो यार you could follow by default, लेकिन वो खेला नहीं, वो अलग बात है. But I have noticed something कि United and Chelsea fans do, मतलब I have seen a lot of Chelsea fans holding a soft corner for Real Madrid, and United, so everyone knows it's like a connection between us and United. United is like a friendly group to us only. वो तो रोनाल्डो फैक्टर तो आएगा ही ना, मतलब you have सूर्यांश, अभी सारा लाने का टाइम आ गया. लिवरपूल फैंस के साथ भी अपना ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा. अरे भाई साहब, नहीं, लेकिन honestly speaking, like again मैं थोड़ा मतलब I won't call myself a fan, लेकिन I have to say the fact कि Real Madrid इस season में especially they've come back from behind time and again. आप basically you are definitely wanting to give them respect यार, मतलब definitely. तो yeah, all English pundits, most of them in fact, और मैं खुद बोला था, like I said, मैंने तो predict नहीं किया था, और La Liga के लिए it's a win as well, that you have a Champions League winner. Talking about that, I think English Premier League say you don't have a Europa League winner, you don't have basically a Conference League winner, you don't have a Champions League winner. So in a strange way it's good for football, क्योंकि it has kind of become equal again, so that's great. But Aditya, thanks for the super chat again. But मैं इसके बारे में वापस पूछूंगा, प्लेयर बाय प्लेयर जाते थोड़ा. क्रूज का परफॉर्मेंस, like the fact that he played almost the entire game, 89th minute में शायद सब्स्टिट्यूट हुआ था. तो firstly Vedant, like क्या लगता है, like in terms of tactics, is it something that for this particular game Cruz was asked to do something, or it was just the matter of not making many changes? See, Cruz has been criticized very heavily this season by us, not even denying. मैंने खुद ने किया है, सूर्यांश ने भी किया है at a certain point of time. But we also need to understand the fact that he wasn't playing at the position where he's comfortable. Yesterday, however, he was playing at the position where he's really very comfortable. That is the DLP role, register, deep line playmaker. So that's where you saw the proper Cruz. And Madrid were in Cruz control last night, because you see, I said it in my preview also कि अगर Madrid को कहीं ना कहीं लिवरपूल के सामने जीतना है ना, Cruz बहुत ज़्यादा important होगा, क्योंकि वो he's a press resistant midfielder, and लिवरपूल की इतनी intense pressing, counter pressing को Cruz and Modric ही beat कर सकते हैं. तो definitely Cruz was really very essential for us last night, and कहीं ना कहीं under appreciate ही किया जा रहा है उसको. लोग कह रहे हैं कि Courtois, MOTM, definitely MOTM, no doubt about that, but you need to mention other players like Cruz also, Carvajal also, etc., who were really very good last night. Brilliant. और यहाँ पर I think विशाल बोल रहे हैं Madrid, Juventus, United are one family created by Ronaldo. हाँ, मतलब मैं काफी देखा हूँ chat में भी, lot of people who kind of follow all the three clubs. So fair enough. अगर different kind of leagues में, तो why not, absolutely. Real Madrid won without their midfield. मतलब there's a lot to be discussed. Very wrong. Without their midfield. मतलब? It's very wrong. The idea yesterday, the plan of action was to take that pressure which Liverpool provides, the Gegen pressing, and subdue it, which was done pretty well, and we all saw it. When we saw when it was like around the second half ka like 60th minute jab start ho gaya tha, when Vinny had scored the goal after that Madrid started pulling the strings. Then Modric did what Modric does the best. He used to do that magician things he does, that Trivela pass, Modric, of course. I'll come to that, Modric as well, because yes, I think for me, simply put, मैं सच बोलूं तो Modric
arguably was again you had so many kind of match winners on the pitch kal totally, but Modric for me was one जो literally 3 जन का काम कर रहा था. मतलब I saw him at times kind of covering for Carvalho. एक बहुत ही अच्छा tactic है. Comments I think from Michael saying that Carvalho was his man of the match while he was bombing on. वो थोड़ा सा kind of a pleasant surprise था for Real Madrid, as much as other games. Mendy was kind of I think थोड़ा पीछे कल because of obviously Mo Salah being there. लेकिन वही है, they had to need cover, when you're talking about Real Madrid. वो Modric करा तो at times I saw Modric at right centre back, at times I saw him as a right midfielder when Carvalho wasn't bobbing on, or at times I saw him as a DM, as a register as well. So I think for me Modric was right up there along with Carvalho for sure. लेकिन I think one guy जो I think every Real Madrid fan will be kind of astonished to know that this guy is also 1-5, and I don't know मतलब कहाँ रखोगे यार इसको Real Madrid folklore में. मतलब Vedant, kind of a weird way to go out, लेकिन fantastic for him, right? Yeah, it is fantastic for him. I mean, like out of the 5 Champions Leagues, 4 में तो इसका बहुत ज़्यादा ही बड़ा हाथ रहा है. So obviously we cannot deny that. And for me, he's like in one of those legend category books. I mean, मेरे हिसाब से कुछ Madrid fans जब हमारा Galactico era चल रहा था, कुछ players को उस time से काफी ज़्यादा ही highly rate किया जाता है. But based on the success this guy has delivered, based on the luck this guy has got us, based on the goals he scored for us, कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स होंगे जिससे मैं इसको आगे रखूंगा बेस्ड ऑन रियल मैड्रिड करियर. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बट मेरा तो सबसे स्लीप क्या है, मैंने कल नोटिस किया ये और हजार्ड आए ना पिच पे. आई डोंट वांट टू मेक फन ऑफ इट बट they were scratching their asses and they were enjoying. Hey, जीत गए. They were like doing nothing. No, you actually saw Bale happy last night. मतलब पूरे squad के साथ celebrating. Casemiro, Modric के साथ बड़ी उसकी conversations चल रही थी. Enjoying. So that was a very good sight, and probably today Santiago Bernabeu you would be seeing him for the last night. Hazard scratching his ass and he was laughing. Like I was like, what the fuck, bro? Just celebrate. You just won it. He was scratching his ass. He was scratching their stomach and all. I was like, what the hell, bro? नहीं यार, सोच के देखो यार सूर्यांश, the guy has been literally injured in Real Madrid. मतलब मुझे हार्डली याद होगा एक पूरा महीना जहाँ उसने खेला है कंटिन्यूसली, ठीक है. और this season, trust me, he would be really happy. अगर मैं भी होता यार, he has won the league and the Champions League, और ऐसा नहीं है कि basically he did work hard at all. Next season he has made sure the physical quotient which was lacking this guy, you can see that the muscle and the weight has reduced. It's quite evident considerably. You इसका physique देख रहे हो आप currently, it's like the Chelsea Hazard का physique. Exactly. और यहाँ देखो इतना swollen face है इसका. नहीं बराबर ही है. This is a clear indication that Hazard wants to be back at his peak. And if he is back, we all know what Hazard does. He just goes this, and then it's a goal. Like he's poetry in motion when he is playing. Like I'll say that. बिल्कुल. एक तो साला मेरे को एक चीज जो खराब लगती है ना, Hazard की कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है that every time he wins a trophy with Real Madrid, Chelsea get 15 million, 20 million. Chelsea earning money. but that was the deal. वैसे ही ओवर करा है. हाँ. Vedant, let's get it right, ठीक है. इस सेंचुरी का बेस्ट चेल्सी प्लेयर हजार्ड है, इस सेंचुरी का. लेट मी पुट इट दिस. ड्रॉग्बा भी नहीं. क्या? ड्रॉग्बा भी नहीं. I would rate Hazard best player. I'm talking technically the best player in Chelsea was Hazard, okay, and that is basically जो okay. Let's put it this way. नहीं तो ड्रॉग्बा एंड लैम्पार्ड इन टैंडम वर्सेस अ हजार्ड, देन बहुत मुश्किल है पिक करना. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल प्लेयर जो लिटरली चेंज करता था मैचेस बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, वो हजार्ड था, ठीक है. और लास्ट सेंचुरी को जोला डिड इट, और हजार्ड हैज बीन कंपेयर्ड टू जोला. और लिटरली वोटिंग हुई थी भाई, सब चेल्सी फैंस अराउंड द वर्ल्ड वोटेड. Zola got the vote for the last century, that till 2000, और 2000 के बाद में for me it's Hazard for sure. लेकिन हाँ, obviously I love Drogba more, I love Terry more because of their attachment with Chelsea, because of जो moments दिला Chelsea के लिए. लेकिन हाँ, this is correct Sumitab, absolutely. But talking about सूर्यांश बोला ना, टक goal, this guy मतलब वही Hazard, हम बोल रहे कि Hazard is not in his prime or maybe he gets back, लेकिन the fact कि Mbappe नहीं आया, मतलब for Vinicius it couldn't be better. Trust me, अगर Mbappe आता तो he would have worked so many. Neymar being sold off for saying the statement that at the moment the best player in the world is Vinicius.
he had Mbappe in his team. He had just हाँ, उसने बोला है that I would want Vinicius to win the Ballon d'Or. उसने ऐसा बोला है. Vinicius to Ballon d'Or. How old is he? 21? 21, 22 ऐसा ही कुछ. Oh my 20. God. मतलब imagine भाई, मतलब अभी ऐसा है. और हमें देखा था यार चेल्सी के साथ. भाई आदित्य, big up यार again. Thank you for this. If Hazard is back in the next season, this team would be inevitable. It's Hazard and Rudiger is add-on. मतलब वो ये मतलब the only difference is Real Madrid, they lack that extra winger. आप बोल सकते हो who's like top notch, right? Rodrigo is fantastic. अगर वो स्टार्ट करें नहीं तो on the bench, that's why I think Rodrigo bench पर रहता है because भैया you need something of the bench. भैया we are planning a move for Serge Gnabry and I guess वो काफी evident है अभी market में for the same fact being क्योंकि Bayern के साथ he has refused every contract negotiations and to get the deal done and Bayern wants the money because you can get money for a player like Serge Gnabry. I mean, like the man when he caused havoc in Spurs became a sensation on internet. Like that 4-goal wala thing was like crazy good in that match. So I'll say that yeah, we are getting him. But apart from that, I feel that Rodrigo, when he plays in the forward place rather than playing at wing position, he is more lethal. He has अच्छा. that knack as a striker. Matlab, See, he knows भैया, where to be. whenever I've seen Rodrigo score, it has either been कि वो सेंटर से गोल मार रहा है या तो वो लेफ्ट से कट इन करके गोल मार रहा है. I have barely seen once or twice जहाँ पे वो राइट साइड से गोल मार रहा है, you know. अच्छा, तो he's not a naturally right side winger is what you He say. can play right wing, but he can't cut in and take shots. He's more of a player, you know. मतलब right side पे खेलेगा तो cross करेगा, but his preferred positions would be a left wing or a striker. So that's why that is what is bothering me. बिल्कुल यार, डेफिनेटली शाउट आउट यार टू मैड्रिड पंडित. यार मैं बोलना भूल गया, आई एम होपिंग यू गाइस ऑलरेडी नो, लेकिन हाँ यार कोई भी बाय चांस मैड्रिड पंडित को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज डू सब्सक्राइब. और उतना ही नहीं, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स. आप भावना में बह नहीं जाओ, दैट इज अ मस्ट बिकॉज वी नीड सर्टेनली यू नो हेल्प इन एवरी स्ट्रीम एज पॉसिबल. एंड अगेन बिग अप जो भी ज्वाइन किया है. एंड वी विल बी ऑल्सो ऑनलाइन फॉर द क्रिकेट. आज बिग आईपीएल फाइनल भी है तो उसके लिए भी होंगे ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस हमारे सेकंड चैनल पे. सो यार डू जॉइन अस लेटर ऑन टुडे. सूरज चेल्सी फैन इन द हाउस, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए. अंकित भाई चेल्सी सिटी पीएसजी पोल के एक ही ऑप्शन में रख दिए यार, इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे. और ऑनेस्टली मैं बोलूं सूरज, मतलब अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, यू नो इट, मतलब मैं फैक्ट्स ही बात करना चाहता हूँ हमेशा. फैक्ट इज अगर चेल्सी जीत जाए ना नेक्स्ट ईयर यूसीएल, इट विल बी वन ऑफ द मिरेकल्स दैट आई कैन नॉट इवन इमेजिन. इतना बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है चेल्सी में, तो इसलिए मैं डाला हूं. और सिटी पीएसजी बिकॉज वी नो यार, मतलब टेक्निकली दे हैवंट वन चैंपियंस लीग टिल नाउ, सो व्हाई नॉट. तो इसलिए मैंने तीनों को एक साथ डाल दिया. और मोर विद द लेगेसी मैंने बायर्न और बार्सा को डाला है, मतलब नथिंग अगेंस्ट. एक सेकंड, पोल क्या है? तो बेसिकली नेक्स्ट सीजन कौन जीतेगा चैंपियंस लीग? मैड्रिड डाला है. हाँ ऑब्वियसली यार, मैड्रिड का 52% है. देखते हैं. अरे लिवरपूल फैन जुड़ जाएंगे और चेल्सी फैन जुड़ जाएगी, देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा. लेकिन आप न्यू प्लेयर साइन करने से अच्छा रोड्रिगो, मैं तो इसके बारे में बोल रहा था. आई वुड से दैट द गाय हैज एक्चुअली वन, यू नो, हिज एक चांस डिजर्व करता है. नहीं गिरी भाई, व्हाट आई लाइक टू से इज बट वेदांत कह रहे हैं ना कि उसका ट्रेडिशनल राइट विंगर नहीं है वो, ठीक है. ही इज अ वेरी गुड फॉरवर्ड, मतलब वो जो आपके लेफ्ट विंग और वो स्ट्राइकर वाला, क्योंकि आई डोंट वांट टू रब सॉल्ट ऑन द सार, मतलब आई डोंट वांट टू रब सॉल्ट, बट भैया यू रिमेंबर दैट गोल अगेंस्ट चेल्सी? यप ऑफ कोर्स, ही डजंट वांट टू रब सॉल्ट. नहीं वो तो एकदम, मैं वही एक्चुअली वही बोलने वाला था. आई एग्री दैट इज सॉल्ट इन माय वुंड, लेकिन वो फॉक्स इन द बॉक्स वाला एक लगता है, मतलब जो होता है ना यार. आई डोंट वांट टू कंपेयर हिम टू दैट बिग ऑफ अ लेजेंड राइट नाउ, बट ही काइंड ऑफ बोलने वाला था. ही इज लाइक रोमारियो. ही हैज दैट, मतलब वो जो नैक होता है ना टू स्कोर गोल्स जो सीजन में, ही हैज दैट फॉक्स इन द बॉक्स वाला वो. Like, of course, what I'll say is that, see, when you're playing a 4-3-3, you wouldn't want your forwards, all the three of them, to be right-footed. You would want at least one of them to be left-footed right winger, or even a left-footed player by chance, whatever. So, isliye I would go for Diaby. I think he's really very, very good, energetic player. Basically, मेरी सादिक भाई से बहुत लंबी conversation हुई सिर्फ उस player को लेके, and the conclusion we came is कि यार he's basically a right winger, basically a Vinicius Junior on a right wing position.
ऐसा ही है वो एग्जैक्टली. Interesting. Don Carlo to win UEFA Coach Award. Yeah, probably. Probably. और यार ये देखिए 100 watching but only 75 lakhs. Like ये तो हो नहीं सकता. Come on, let's get in the likes. Everyone, please subscribe to Madrid Pundits. Please subscribe to our channels as well. You won't be disappointed in all the 3 channels I'm talking about. Absolutely. सूर्यांश यहाँ पर बोलते हुए भी. लेकिन यार एक बंदा यार, I would say that मतलब हम बहुत बार क्या ना लेगेसी में बह जाते हैं, स्पेशली पीपल लाइक मी और लाइक ओल्ड स्कूल, और हम बोलते हैं नहीं यार, ऑफ कोर्स यू नो यू हैड रोबर्टो कार्लोस, मतलब ही वाज द बेस्ट लेफ्ट बैक एवर, दैट इज, मतलब आई एम जस्ट यू नो पुटिंग इट आउट देयर. मार्टिनी वाज वन ऑफ द यू नो बेस्ट सेंटर बैक्स. टेरी वाज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स. Where would you put him? Because this guy has won literally everything. He has literally won everything. मतलब is it unfair on him? The only one you can say alongside Roberto Carlos. He is the only one you can say that has matched the legacy of Roberto Carlos. Like legacy wise at least. 5 UCLs. 5 UCLs, out of which the 4 he played, he was exceptional. And at one time, everyone wanted a Marcelo in their team. And left back position for the past decade, he has been the maestro. He has been the pinnacle of being a left back. So I'll say he is the only one who can be compared and has the right to be named alongside Roberto Carlos. हाँ वही, मतलब lot of times हम क्या देखते हैं ना, मतलब जो मतलब lot of YouTube videos है, for example, people who have not watched Roberto Carlos, I've watched him live a lot. I'm telling you, like, हाँ, the guy was phenomenal, you know. एक मतलब एक डर लगता था जब वो फ्री किक लेने के लिए ना खड़ा होता था. That used to happen. लेकिन वही है, Marcelo, he might not have that one moment, but if you see, मतलब in his prime, जो obviously La Decima and all that, he was probably very much there, right? जो किया था in terms of, you know, he used to play like a proper winger, end to end. I don't think he was more like a left back at all. तो lot of times एक, you know, emotional factor जो होता है goes against Marcelo. और yes, Matata United, I think it was safe to say it was the last match for Madrid. Obviously, he will be emotional. You know, he 25 trophies, if I'm not wrong, right? 25 trophies. Most decorated player in Madrid's history. Madrid's history. Oh my God. 120 plus years के history में he is basically the most kind of, you know, decorated player. Imagine that. But this guy यार, मतलब again हम बात कर रहे थे man of the match. सांप तो है ही. और मैं यार पोस्ट भी उसको सांप ऐसे कर रखा है. मैं इसलिए ज्यादा देर ना स्क्रीन पर डालूंगा नहीं उसका चेहरा. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा क्विकली यार, पीपल अगेन वाचिंग, यू आल्सो टेल मी, लाइक हाँ, मतलब द गाय, मतलब इन रिसेंट इयर्स और एटलीस्ट मैं बोलूंगा चैंपियंस लीग फुटबॉल में मुझे याद नहीं है ऐसा गोलकीपर डूइंग, यू नो, दिस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन चैंपियंस लीग फाइनल. 9 सेव्स, और आई थिंक यही नहीं, लास्ट 2 मैचेस में भी 8 सेव्स थे, तो टोटली यू आर टॉकिंग अबाउट 25 सेव्स, 57 सेव्स, 58 सेव्स पूरे इस उसमें प्लेऑफ के उसमें. भाई साहब, दैट इज लाइक नेक्स्ट he लेवल. was no he मतलब he is like वो मैनुअल नोयर नहीं था 2013 का, who was literally impenetrable बोलते थे ना जिसको, कि you couldn't score against. Courtois has been exceptional this season. People were talking about Alisson being better. Yeah, I can agree on ball distribution point of view, but yeah, you cannot compare him to anyone at that point. The way he plays the game, na, the way he was cheering his team and the way the saves he made, it's something you will choke under the pressure. But Courtois gave an exceptional performance yesterday alongside, of course, my Mon Favre, Dani Carvajal. What a game he had, bro. What a game. Dani Carvajal is definitely right. It was epic. आपको मालूम है अंकित भैया, Alisson has 60 saves in the Premier League, which is a 38 का पूरा. And we celebrated that. Precisely. Courtois in the Champions League only has 57 saves, which is a big compliment to Courtois, of course. But कहीं ना कहीं एक slight flaw दिखाता है आपको ये Real Madrid का, because you shouldn't be allowing so many shots for your goalkeeper to save. नहीं, वो तो रूडिगर आप लोग ले लियो यार, वो हो जाएगा थोड़ा. मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब फैक्ट है वो, that's a fact. भैया, बट एक चीज कल ना बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है कि हेडर्स जो थे ना, वो कोनाटे और वैन डाइक को जीतने ही नहीं दिए कल. जितने भी कॉर्नर्स हुए हैं ना, या तो वो कार्वाहाल ने क्लियर कर दिया, या फिर एल्बा का Militao was phenomenal last night. I had questions whether Militao should start or not, but he's delivered. भाई Militao बहुत ज़्यादा ही बढ़िया खेला.
और मैं यहाँ पे But देख रहा हूँ लोग बोल रहे हैं खाली मैड्रिड की बातें, एक दो कमेंट्स में देखा यार, मैं लिवरपूल फैन का वेट कर रहा हूँ और we'll come to Liverpool as well, we'll be talking about them because they also honestly speaking were unlucky. जैसे मैं तो यार बोलता हूँ finals on that day, any day can, any person can win, you know, you cannot say that Liverpool are not there. Absolutely there were flaws, हम आएंगे उस पर, और इसलिए मैं चाहता था Liverpool perspective, hopefully Uday will join, it's very early in the morning उसके लिए, तो हो सकता है absolutely. लेकिन यार अगेन मैं देख रहा हूँ 125 people joining but we have very few likes. तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तब अलग बात है, लेकिन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, the thumbs up button and do subscribe to Madrid Pundits to our two channels definitely, और जुड़ना है हमारे साथ क्योंकि हम IPL फाइनल वॉच अलोंग भी करेंगे आज from mid innings, right? Absolutely. Courtois is good with ball as well. Sooryansh bhaiya, look at Stamford Bridge. He was being used to invite Chelsea to press high. मानव यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा मैं, हाँ he has improved a lot. He has improved a lot. लेकिन I don't think he was ideal. मतलब वही है, कल मैं और गुरुजी and बाबा were doing a watch along I think with Rohit bhai, right, and Kuldeep bhai on Sports Yari. तो हम लोग उसकी बात करते हैं कि यार ये साहब जो है ना, चेल्सी छोड़कर सब चीज झट से सीख लिया. मतलब द थिंग दैट वो प्रॉब्लम थी चेल्सी में, फॉर सम रीजन और द अदर, मे बी इट्स द गोलकीपिंग कोच आप बोल सकते हो, मे बी इट्स जस्ट द फैक्ट कि यार फॉर मतलब ही यूज्ड टू ओपन हिज माउथ अ लॉट, दैट्स अ फैक्ट. जब भी इंटरनेशनल ब्रेक में होता था ही यूज्ड टू ओपन हिज माउथ, और इवेंचुअली जो किया चेल्सी के साथ दैट वाज आल्सो रीजनेबल. थ्रू आउट एक लाइकिंग ना फॉर कोर्टवा आई नहीं, तो फॉर सम रीजन वो एक सबकॉन्शियसली आप एक्स्ट्रा 1% या 2% देते हो, वो हो सकता है नहीं आ रही थी. But again, what do you guys think about this statement? Again, Chelsea fans आप बोले especially, and of course Real Madrid fans, बंदे ने बोला है कि I was there to prove you know people wrong and I am not kind of respected, especially in England. तो मतलब while all the respect for him for his performance, one of the best, मैं खुद बोला हूँ, लेकिन वो लाइन बोलने की क्या जरूरत थी भाई? Vedant, what is your opinion? Like, is that the only issue with Courtois if at all? The part that I'm not respected enough in England. मतलब लिटरली मतलब let's be honest, वो लिटरली बोला है कि मैं यार इंग्लैंड फैंस को दिखाने के लिए किया हुआ है, सिंपली. नहीं, that is not exactly what he meant. The thing is कि काफी सारी मैगजीन wait. It's वो sorry, I don't want to interrupt. Confirmed, Sadio Mane has decided to leave Liverpool this summer. Fabrizio Oh Romano. my God, the last night's result was crucial, huh? भाई हाँ, साहब, breaking news. It has been confirmed on by Fabrizio. Liverpool fans, यार do let me know. And again, Bayern Munich fans will be pretty happy and pretty sure. मुझे तो लग रहा है वो is kind of, you know, inevitable होने वाला है. Just my gut feel. But yeah, we'll come to that. लेकिन again, Sooryansh, what about you यार? Courtois जो मुंह खोलता है ना काफी बार, मतलब that the way he says it, put it that way, like I don't think he comes across right. That is the only main problem with him. I'll say it's partially right, it's partially wrong. On the point of view that he was expressing himself, yeah, that is right. But the words he meant it, and of course we can talk about the communication here, right? The usage of words do act as sometimes problematic for some, and sometimes acts real well for the others. You can mince words. I guess that is the only issue right here, because I guess even though you may not respect him as a you may respect him as a player now. The kind of performance he has given, everyone has to give him to that. Like, see, it is not even, we are not talking about a goalkeeper doing a good performance. We are talking about the best possible performance that has taken place in a final. He saved 9 shots. In the history of this Champions League final, no team has saved those many shots. And if it weren't for Courtois, we would have conceded 3 goals. 3 goals. At least. नहीं, मानव बोल रहे हैं ना, सूर्यांश और वेदांत, like एक second, Vedant, I know I'll take your views as well. मैं quickly यहाँ पर आऊँगा. मानव puts it brilliantly. मतलब मानव, thanks for putting this comment. Like मैं कल उसके गुण गा रहा था, और सब लोग जो देखते हैं चैनल है ना, पहले दिन से पता है कोर्टोआ और मेरी क्या kind of equation है. People know it exactly, right? All Chelsea fans. Let's be honest. और कल मैं लिटरली गुण गा रहा था उसके परफॉर्मेंस के लिए. लाइक आई एम लाइक वाओ मैन, दिस इज द बेस्ट कीपर, नो बार, यू नो. और द मोमेंट आई सेड इट, भाई ने ड्रॉप किया वॉर्म विद दैट स्टेटमेंट, और मेरा पहला वही था भाई, क्यों आई थिंक you don't need to that respect that he kind of, you know, commanded with that performance. He had got that from me. After that, by saying that, he's kind of, you know, spoiled that. But again, you can say that maybe he'll learn, you know, now that he's won the first Champions League.
he'll probably get more and then probably he'll learn, as in it's not the end of the world. Like, Vedant, what do you think about this? See, what I feel is कि यार, for example, उसने Barcelona वाले game में भी, if I'm not wrong, he said that the El Clasico win by Barca was a fluke. वो कुछ ज़्यादा ही मतलब एक तरीके से वो उतना नहीं बोलना चाहिए था. It wasn't a fluke. It was a brilliance by Barcelona. But coming back to this, जो उसने कल बोला है, he was basically targeting the news magazines more rather than the English fans, to be very honest. उसने मतलब literally नाम भी लिया है कुछ का, and in fact I think कहीं ना कहीं sort of diss भी रहा है towards UEFA, because if you see Courtois 2021 season under Zidane, he was very very good. मतलब this season also he's been great definitely, but last season also he was very very good. And despite the fact कि यार Madrid Champions League semi-finals थी and कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से La Liga भी जीतनी चाहिए थी, he didn't get any मतलब एक तरीके से honorable mention also एक तरीके का in the top 5 goalkeepers in the world. Back then, Edward Mendy was on the spot. His image goes against him. Or talking about Mendy, Matata United, that's actually one name मैं बोलना चाहूँगा quickly. यार, if you actually followed me and any Chelsea fan very closely over the last year, we probably rated Mendy over everyone. And अभी हम realize करें कि Mendy is maybe not good as that. हाँ, he can be, but what he's shown in last year. So we have celebrated Mendy for sure. But yeah, Vedant, please continue. Yeah, so वही है, मतलब आपने top 5 goalkeepers in the world में भी इसका कहीं नाम दूर दूर तक नहीं देखा. You rated 5 better keepers, जो कि मेरे हिसाब से Mendy deserved a spot, Donnarumma deserved a spot, बाकी मेरे हिसाब से debatable. तो उसका कहीं ना कहीं हाँ Donna didn't. I'll tell you. Going by the Euros, my friend. Going by the Euros. एक Euros में ना Donna saved that penalty. Otherwise, they were actually getting clapped. जहाँ पे Donna फंस रहा था. Donna has the height. चल वो छोड़. बाकी वो उसने कोई भी मैगजीन ने उसको इतना highly rate नहीं किया. And like we Madrid fans, we've been watching game in game out. We've said through and throughout कि यार Courtois इतने saves निकाल रहा है. Nobody was willing to understand the fact that यार Courtois was that good. So many friends of mine who were like big Premier League fans and they don't watch La Liga that often because the game is a bit slow compared to the Premier League. वो लोग कह रहे थे यार नहीं भाई slow league है, इतना competition नहीं है, etc. No one was rating him. But games like these in the Champions League against PSG, Chelsea, City, Liverpool, that's when people realize Courtois' brilliance. And kind of he kind of does have the bragging rights because after such a phenomenal performance at the Champions League final, you kind of can say that, to be very honest. And he deservingly should be in the top 10 Ballon d'Or. This is the thing I was waiting for. Carragher, fuck you Carragher. नहीं मैंने देखा पोस्ट मैच इंटरव्यू में था वो था भाई बीटी स्पोर्ट या स्काई स्पोर्ट कहीं तो था. अरे वो कह रहा था come to Klopp. He lost money. Bro, fuck money. What he was trying to say about Madrid, that they have no chance. Bro, sit in your home, bro. Danny Carvajal. Leave that again. मतलब मैं यहाँ बोलना चाहूँगा because it's a fan channel for all to see. भाई, it's not against Liverpool, it's against certain characters. और Carragher is that character, unfortunately. I respect Liverpool. Everyone thinks Carragher is a clown. See, and this is not just about Carragher. It's about English pundits having that kind of a pride for English football only. And you can have pride for your country's football, no doubt about that. But किसी दूसरे कंट्री के फुटबॉल को या किसी दूसरे क्लब को डाउनग्रेड तो आप नहीं दिखा सकते ना. फिर वो रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी आपके लिए? बिल्कुल. अच्छा, यहाँ पर तो मड्रिड को नहीं कर सकते. मैं तो बस अरे यहाँ एक कमेंट है भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार आने के लिए. होप आप सब्सक्राइब हो हमारे चैनल्स पे. आप मजे लो, पूरे मजे लो, मड्रिड पंडित्स के भी मजे लो. और कोई मुझे बच्चा बोला है वही कॉम्प्लीमेंट है भाई. मैं तो इतना सिंपली बोल रहा हूँ भाई. Just go and Jamie Carragher के comments सुन, फिर तू बोलेगा कि what the hell is going on भाई लाइफ में. और उतना ही नहीं कैरा नहीं भाई. हमारे क्लब लेजेंड्स मैकनानमन just chose 2 Madrid players, Modric और Benzema. Vinicius भी नहीं. ये पता नहीं क्या था. मतलब अगेन नथिंग एज लिवरपूल, बट वंस दे गो टू लिवरपूल इट्स अगेन आप बोल सकते हो इट वाज द ओल्ड लेस्टर. जैसे आज के दिन में लेस्टर सिटी प्रीमियर लीग में इज दैट लवी डवी काइंड ऑफ फीलिंग आती है ना, वो आती थी लिवरपूल के लिए इन द प्रीवियस डेकेड. और पीपल जो आ रहे उस टीम से ना, लाइक योर जेमी कैरेगर, माइकल ओवन, योर मैकनामन, ऑल दोस, दीस आर ऑल पीपल जो है ना इतना प्यार है. आई डोंट नो व्हाट फॉर. लेकिन माइकल ओवन भी यार, अ पर्सन हु प्लेड फॉर बोथ क्लब्स. ही शुड रिमेंबर दैट मोर देन एनीवन, राइट? मैकनामन, मैं आपको एक बात बताऊं. जो भी मड्रिड फ्लॉप्स रहता है ना, वो यूजुअली मड्रिड के अगेंस्ट ही बोलता है. आप कसानो को देख लो, इतना फल के वो बंदा मड्रिड के खिलाफ बोलता है. ऊपर से माइकल ओवन भी इज नेवर सेड समथिंग गुड अबाउट मड्रिड.
तो वही है, I mean, बोलने दो जो मतलब बोलना वही है, मतलब हमारे पास हमारी ट्रॉफी है। they were just नहीं salty, भैया, मतलब simply put. what got me the हाँ। most is ना, people were saying कि मेसी ने बुरा किया उसको डोंकी बुला के. When you give statements about players ना, at least know whom you are talking about. He gave such disrespectful statements about Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. You should understand whom you are talking about. ठीक है, there should be mutual. Even though we are not fans of Lionel Messi, but we will not criticize him, bro. He is the Yeah. he alongside Ronaldo are the greatest of all times. So you have to give that भाई, to the them. way he disrespects Ronaldo, मतलब bro, you haven't even done 1/10 of the career of Ronaldo, you know, इतना भी पर कोई नहीं, करने मतलब का ये तुम्हें तो हक देखो, नहीं है वैसे। I think now is the time for Madrid to celebrate, especially I know again conversation Liverpool fans, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं salty यार. एक मैं इससे disagree करूँगा. Michael Owen wasn't a flop. I would be saying that नहीं. He was a superb, effective super striker. Like Chicharito was in Man United and मेरे ख्याल से काफी effective थे even in Real Madrid. But again, the guy who's probably effective right now is this guy. मतलब ये तो लिख दो. He is definitely getting वो तो अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर ये नहीं मिला ना इस बार, मतलब भाई, I think this is the last step that I'll be watching Ballon d'Or ever. वो मतलब UEFA का प्रेसिडेंट का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ. उसका फिर उसके ऊपर बहुत केसेस निकलेंगे. वो फिर तो. याद रखने लायक भी नहीं है भाई. वो तो मतलब इट्स सो एपिक ना अंकित भैया कि इसके लिए ना इट्स सो मतलब हार्ट वार्मिंग एट दिस पॉइंट कि ला लीगा क्लब्स लाइक चेल्सी एंड ऑल आर कमिंग आउट एंड सपोर्टिंग बेंजेमा. ठीक है, स्टिल पीपल आर लाइक कि नहीं यार नहीं जीतना चाहिए. वो प्रेसिडेंट पता नहीं क्या स्टेटमेंट्स दे जा रहे हैं. मतलब बहुत बुरे हाल हैं मतलब यूएफा के तो. एंड प्लस आई लाइक टू ब्रिंग टू एवरीवनस नोटिस, कल लिवरपूल फैंस के साथ बहुत बुरा हुआ है. लाइक कंसीडरिंग वो फेक टिकट्स वाला सिनेरियो हुआ है जिसके कारण डिले हुआ था मैच. आई लाइक टू क्वेश्चन यूएफा एज वेल देयर कि व्हाट वाज रॉन्ग, हाउ वर यू. See, honestly, चैंपियंस लीग फाइनल के हिसाब से तो यार अरेंजमेंट करे ही नहीं थे उन्होंने. हाँ, ऑनेस्टली agreed. टीयर गैस बच्चों के मुंह पे फेंके जा रहे हैं. ये क्या हो रहा है? मतलब are you not humane or something? Because you clearly cannot do that, you know, especially there were women also at the same vicinity. You're throwing tear gases at their faces. Simply, you know, you have to put questions on the absolutely. Yep. Well, for such a big occasion, you're not even prepared for the worst. Like that tells you basically there is more to it certainly. Lekin bhai, again, Benzema had a bad night. Sorry, he had a great night. Bad night, bro. Salah, I think personally, मैं बोलूँ तो he was Liverpool's best player. He had काफी moments. I think जो था कोर्टवा एक बार आए थे. I think he moved away from his goal, or he had a very good positioning. If not for basically Mane and Diaz not being there, I think वो था काफी fatigue लग रहे थे. Would it be fair to say like Mane and Diaz दोनों ही थोड़े fatigue लग रहे थे. Salah was the guy along with Trent जो उस side से ज्यादा attacks आ रहे थे. तो again बैड लग गया, टफ लग साला. मतलब ही इज ऑब्वियसली लॉस्ट द बैलन डोर अभी, लेकिन हाँ लुक्स लाइक इट अगेन एट दिस पॉइंट इन टाइम. लेकिन पीपल स्पेशली लिवरपूल फैंस आप बोलिए यार, मतलब कैन साला कंटिन्यू दिस फॉर्म? लाइक ही इज गॉट अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स इस सीजन में. आई थिंक ही इज गॉट दोस, मतलब बैक इन द डे वी हैड माइकल बैलक, मतलब एक था, मतलब बोलते थे पनौती. हर एक टीम में ऐसा थी. 4 फाइनल्स हारा था एक सीजन में माइकल बैलक. वो पता नहीं कौन सा, वो वर्ल्ड कप भी हारा, वो पता नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ. इट वाज लाइक शैम्बल्स. माइकल बैलक साला को ऑलमोस्ट हो रहा है, लुक्स लाइक इट, स्पेशली 4 ट्रॉफी हार गया ये. मतलब ही डिडंट क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप, ही डिडंट विन द एफकॉन, एक और कोई ट्रॉफी हारा है ये, ठीक है. देन चैंपियंस लीग ऑफ कोर्स ही लॉस्ट चैंपियंस लीग. मतलब प्रीमियर लीग भी हारा, सॉरी प्रीमियर लीग भी गया. मतलब इट हैज बीन लाइक टफ टाइम फॉर हिम. So again, going back to the Salah versus Courtois, I think मेरे ख्याल से the one that Courtois ने अपने as in wrist से जो save किया था, that is the best save. That was like world class. और माने मतलब I think दोनों ही मतलब probably should have been goals, simply put, नहीं. तो I think Salah was unlucky there. You can safely say absolutely. मतलब again, I know Madrid fans would love to see this, and I'm not putting it just for the sake of it. लेकिन मैं दिखाना चाह रहा यार, it is really emotional. Virgil van Dijk honestly did not have a great game either. Matlab, he was not having his presence even with set pieces and stuff like that. For whatever reason, he didn't one single header. Virgil van Dijk inside the box didn't have that header wala quality, which is considered, क्योंकि when you have players like Konate and Van Dijk who are very tall and very physical, you should get one header. नहीं मारा गया, इनसे header ही नहीं touch हो रहे थे.
That is like, बिल्कुल। where is the next भाई, season to book the hotel? एक सेकंड रुक जा. 185 people are watching the stream and there are just 121 likes on the stream. What are you all doing honestly? मतलब लाइक करने के पैसे जाते हैं क्या? करो लाइक स्ट्रीम को यार, कम ऑन. करो करो, और वो भी यार जहां तक मुझे मालूम है काफी रियल मैड्रिड फैंस है, तो आप तो खुश होंगे यार, कम कर दीजिए, और नहीं भी होते यार नेक्स्ट ईयर दैट्स ओनली द नेक्स्ट ईयर, इसलिए पोल है. नहीं अभी करो यार, why are you not supporting him? हाँ अभी करो भाई. मैड्रिड फैन से मैं कह रहा हूँ, मैड्रिड पंडित्स हम ही कह रहे हैं, करो सब्सक्राइब करो भाई, करो. नहीं करा. Do support him. Absolutely helps, and of course same goes to Madrid Pundits. Please आप भी सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया. लेकिन हाँ यार क्लॉप को अगेन आप बोलोगे यार, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो पोस्ट मैच इंटरव्यू था उसकी बात जरूर करेंगे विद मैड्रिड पैनल. प्रीटी श्योर आप लोगों ने सुना होगा, इट्स अबाउट एज इन ही प्रोबेबली थिंक्स कि यार लिवरपूल डिजर्व टू विन. मैं यार बिफोर टेकिंग द पैनल्स ओपिनियन, मैं एक चीज मतलब मैं तो बोलूंगा, आई डोंट वांट टू गो ऑन मिनी रैंट, लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन ना, मे बी सोशल मीडिया है कि व्हाट नॉट, कि लास्ट 10 साल में स्पेशली जब पेप आया, एंड आई रेस्पेक्ट पेप लाइक एनीथिंग, पीपल नो हु फॉलो द चैनल, ठीक है. प्रॉब्लम ये है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी द लिवरपूल जो पंडित्स है इन बेसिकली लॉट ऑफ टीवी स्टेशंस, ये कौन सा फुटबॉल है कि यू आर सपोज टू प्ले ओनली सेक्सी फुटबॉल, यू आर सपोज टू स्कोर ओनली गोल्स एंड दैट इज द ओनली वे यू विन गेम्स. मतलब हु हैज गिवन दैट रूल? मतलब आई डोंट नो इफ आपने सुना है, जोसे मोरिन्यो हु वन अ यूरोपियन कप दिस ईयर, अगेन यस, उसने भी काफी सालों तक इतना सक्सेस देखा है विद द थिंग्स दैट इज डन ऑन द पिच. You don't win, especially cup games, especially finals. You don't win matches just by doing that. Or if Liverpool thinks that by having 17 shots and not scoring, and Madrid having 2 shots in first 80 minutes and scoring 1, they deserve. I'm sorry to say, boss. Then we deserve the Carabao Cup, we deserve the FA Cup, and whatnot. So let's not go there, Mr. Klopp. I respect you. No, I'll get to that point only. Kovacic had 3 shots stuck on that crossbar in that Carabao Cup. मेरे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या बहुत? नहीं मुझे तो नहीं आ रही. वो भैया वो तो आपको भी याद होगा, मेरे को भी याद है, क्योंकि आई सॉ दैट मैच, वो कैराबाओ कप का, कोवाचिच का 3 बारी क्रॉसबार पे लगा था शॉट. अरे माउंट पुलिसिक तो लिटरली टैप इन था एक तो, ठीक है. तो उस हिसाब से तो आई गेस चेल्सी डिजर्व टू विन दैट गेम. सेम गोज विद दिस एफए कप फाइनल, क्योंकि बिकॉज उसमें भी इक्वल चांसेस थे. आई एम लाइक, if you have like 20 chances and you are not able to convert one, there is something wrong. There is something wrong in the team. And if you have 2 chances, you are converting 1. That means your team has that killer instinct which is required. और वो chance था ना, वही था कि ये लोग जो मतलब I'll say that because बहुत लोग कॉकी हो रहे थे इस चीज पे कि हम लोग शॉट्स ले रहे हैं ना, बट जैसे ही सेकंड हाफ में वो आया ना काउंटर अटैक में, आई न्यू कि I don't want to say it out loud, but अब बोल ही देता हूँ क्योंकि आ ही गया वो टॉपिक. नहीं बोल दो यार, मतलब फैक्ट इट नीड्स टू बी स्पोकन. तो लोग वही सोचेंगे कि दैट्स ओनली वन वे ऑफ थिंग. आई न्यू कि ट्रेंट की साइड से गोल आएगा, क्योंकि वहीं पे कुछ डिफेंसिव एरर होनी थी. रॉबर्टसन ट्रेंट को बचाने के लिए ही हैड टू स्विच द साइड्स, तो वैल्वर्डे को वहां पे एरिया मिला एंड वैल्वर्डे डिड आई गेस अ शॉट या क्रॉस. इट्स डिबेटेबल. क्रॉस था भाई, क्रॉस था, शॉट नहीं था. क्रॉस ही मान लेते हैं, डेफिनेटली क्रॉस था, ठीक है, क्रॉस मान लेते हैं. And Vinicius had the world's time to score. And this Nikhil ने बोला है ना, that's the point. मतलब seriously you deserve to win the Champions League with that stat. Klopp, you've been brilliant. Liverpool have been brilliant. All respect to them. वो deserve करते हैं, till the last week they were there in the Premier League or Champions League में, it deserve to be in the final. लेकिन to say that it deserve to win the final, हाँ. और अगेन आई नो यार, एज अ कोच, अगर मैं कोच हूँ कोई भी टीम का, मैं तो अपना बढ़ावा दूंगा अपनी टीम को, बोलूंगा नहीं वी काइंड ऑफ डिड वेल, आई एम प्राउड ऑफ माय टीम एंड ऑल दैट. बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन ना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन, जैसे सूर्यांश ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अबाउट कॉकीनेस एंड बीइंग कॉन्फिडेंट. यू कैन बुक अ होटल इन इस्तांबुल, प्लीज गो एंड डू दैट, ओके. लेकिन आप वॉच अदर टीम्स प्ले ना, एग्री लेकिन आप डिजर्व अंकित भैया इसी में मैं एक पॉइंट आपको ऐड करके दूं ना, तो अभी आप कोर्टुआ और साला को कंपेयर करो. Courtois, after the best performance of his life, claimed कि I don't get the respect, etc. ये भी इसने नहीं कहा that I'm the best keeper in the world वगैरह वगैरह. And Salah, on the other hand, before the Champions League final, when he's not having a good run of games, has to claim that this is revenge mode, etc. bull crap. Let your performance to the top, After, for example, if Liverpool had won the game, उसके बाद तू बोलता तो ज़्यादा better होता. People would have respected you more.
But since you've done this, Madrid fans obviously तेरी मारने जाएंगे because we've got the bragging rights now because we won the trophy. And going back to the point कि यार beautiful football से is the best way to win a trophy, etc. etc. हाँ वो एक thought process है. People do like watching attacking minded football, etc. etc. But post 25th or probably even 30th minute mark, did you see Liverpool actually dominating the game? And चल first half ही छोड़ दो, second half में did you see Liverpool dominating over Real Madrid? I really doubt that because Madrid कहीं ना कहीं were allowing. भैया जैसा वो मिडफील्ड वाला गेम था, क्योंकि आई कैन रिलेट इट टू द चेल्सी का गेम. एक चेल्सी का वाज अ गेम अगेंस्ट यूवेंटस जिसमें 4-0 जीती थी चेल्सी. ठीक है, इट्स अ ग्रुप स्टेजेस का मैच. उसमें क्या हुआ था, चेल्सी इनिशियली ना बहुत अटैकिंग उसमें चली गई थी कि धनाधन मारेंगे गोल. फर्स्ट गोल के बाद चेल्सी बैठी पीछे. दे वर लाइक करो जो करना है, क्योंकि यूवेंटस वर रैटल्ड, क्योंकि जब आपको इनिशियली पड़ जाए गोल तो यू आर लाइक डन. तो जब वो वैसे हुआ ना, द सेम थिंग आज मैड्रिड ने की. दे वर अब्सॉर्बिंग द प्रेशर, करो 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 करो. वी वर मेकिंग स्ट्रिंग ऑफ पासेस, शॉर्ट पासेस, लॉन्ग बॉल जो भी आई है वो मॉडरिच की साइड से बस विनीशियस की साइड गई है, क्योंकि एवरीवन न्यू कि वहां पे अगर ट्रेंट फंसा, ट्रेंट इज डन. एवरीवन न्यू कि सूर्यांश तेरे को याद है क्या वाल्वर्डे ने भागते एक लॉन्ग बॉल डाली है टू विनीसियस एंड हाउ एक्यूरेट दैट वाज. भाई मेरे को तो बार-बार दिमाग में वही याद आ जाती है, पता नहीं क्यों. मतलब अरे भाई कैसेमिरो वाज ब्रिलियंट ना एज वेल. कैसेमिरो क्या कर रहा था व्हाइल these guys on the wing were doing, Modric and Valverde were kind of switching. यहाँ पर कैसेमिरो वाज ईदर ड्रॉपिंग ऑफ एज अ थर्ड सेंटर बैक और देयर वर टाइम कि वो सेंटर फॉरवर्ड भी हो गया था. तो बहुत ही मतलब दे वर कवरिंग फॉर ईच अदर वेरी क्लियरली, और दैट इज द पॉइंट. और बीच में नो द स्पेसेस दे वर पासिंग. लेकिन दिस इज द पॉइंट काफी लोग पूछ रहे थे. भाई यार उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, किसी ने एक्चुअली थियागो के बारे में पढ़ा? क्या हुआ क्या था यार? वो जो ही वाज क्राइंग एंड स्टफ, आई थॉट ही वाज इंजर्ड. क्या हुआ था बिफोर द गेम? एनीवन नोज इन द पैनल और द चैट? इनिश आई थिंक थोड़ा सा कैराबाओ कप के पहले भी हुआ था where he was injured and he was taken off. लेकिन he played the game and for me मतलब he didn't look injured. I don't know if people might correct me there. अंकित भैया, there's a very sad news. I just got it. सिद्धू मूसेवाला has passed away. R.I.P. Oh, that's bad. Yeah, that's He really was sad. shot. ऐसा कुछ आ रहा है, but let's not get into भाई वो that. तो कितना यंग था. हाँ, but let's not get into that. R.I.P. from our side. Please guys, मतलब ऐसा मत स्पैम मत करना प्लीज. एंड ऑफ कोर्स भैया कमिंग टू दिस ओनली ना, आई थिंक कि ये ऑफसाइड तो था, मतलब अगर हम रूल्स के हिसाब से जाएं, बट वो रूल इतना मतलब अजीब रूल है ना, लाइक पीपल डिफ्लेक्शन. कौन मेरे को एक चीज बताओ, कौन डिफेंडर फॉर द पीपल वाचिंग अस, मैं बस ना फट से एक्सप्लेन कर देता हूं वो रूल क्या है. बेसिकली द ऑफसाइड रूल स्टेट्स दैट अगर आपका गोलकीपर आपका सेकंड लास्ट ओपोनेंट है एंड यू आर बिहाइंड हिम, इट विल बी डीम्ड एज ऑफसाइड. हाउएवर अगर दो प्लेयर गोलकीपर के पीछे हैं, जैसे कि इस इंस्टेंस में आपको दिख रहा है कि दो प्लेयर हैं यहाँ पे जो कीपर के पीछे हैं, यू विल ओनली बी ऑफसाइड अगर आप आगे हैं सेकंड लास्ट ओपोनेंट के. फॉर एग्जांपल इस केस में जैसा आपको दिख रहा है बेंजेमा जहां पर है एंड वैन डाइक जहां पर है, तो वो ही है यार. मतलब इन अदर वर्ड्स मैं बोल देता हूँ कि यार यहाँ पर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग रॉबर्टसन है, रॉबर्टसन इज द लास्ट मैन. ठीक है, तो आप इमेजिन करो रॉबर्टसन इज द गोलकीपर इन दैट प्ले. अगर नॉर्मली गोलकीपर वहां होता तो कैसे होता? यू वुड स्टिल एक्सपेक्ट वन प्लेयर टू नॉट बी ऑफसाइड. वो ये यहाँ पर कोई प्लेयर है नहीं इसलिए ऑफसाइड है. लेकिन जैसे सूर्यांश ने बोला, डिबेट है कि यार ये जो था डिफ्लेक्शन वो उसके नी पर लगा, तो अब हु कैन टेल मी लाइक इन हिज माइंड कि यार वो इंटेंशनल था कि नहीं? आई कैन नॉट. यार नहीं, मतलब अंकित भैया इट इज सो शैलो ना, लाइक समवन इज सेइंग कि यार मतलब मेरे को ये कभी समझ ही नहीं आएगा लॉजिक कि डिफेंडर, व्हाई वुड डिफेंडर पास द बॉल टू मतलब दूसरी टीम का वो स्ट्राइकर. मतलब ऑफ कोर्स क्यों देगा? ऐसा तो नहीं है कि सबको बस मन चढ़ रखा है, नहीं भाई आज हमें भी गोल खाना है तो लेट्स पास द बॉल, देखते क्या करता है वो. ऑफ कोर्स नहीं सूर्यांश वही बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है वो हिट करने गया फॉर द अदर डायरेक्शन लेकिन चले गया स्ट्राइकर के पास, वो भी हो सकता है ना. तो दैट आई वुड कॉल दैट इंटेंशनल, बट वो ये इट इज काइंड ऑफ इफी, इसलिए डिफेंडर गेट्स द बेनिफिट ऑफ डाउट. लेकिन अगेन यार बिग अप टू वेदांत, क्योंकि हाँ वेदांत तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आए और करीबन एक घंटे से ऊपर रहे. तो वेदांत थैंक यू यार. लास्ट थॉट्स क्या लग रहा है? मतलब विल स्टिल बी देयर विद सूर्यांश होपफुली फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, और आई डोंट नो उदय का मैसेज आया कि नहीं. प्रीटी श्योर ही इज नॉट इन द गुड मूड with Liverpool, but big up to him as well. लेकिन वेदांत यार last word for you.
Amazing night. We clearly deserve to win the Champions League मेरे हिसाब से. काफी लोग ये भी कह रहे थे that Liverpool dominated over Real Madrid. I mean, second half में तो कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि लिवरपूल हैड डोमिनेटेड मैड्रिड. थैंक यू जितेश भाई. तो कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था. ऊपर से यार द गेम प्लान वाज वेरी सिंपल. You'd go wide, you'd let Liverpool press you because obviously they're very good at that. You'd let Liverpool press you. You could even see our backline compact नहीं थी जरा सी भी. काफी wide open थी. You'd see David Alaba, Milita काफी distant, and you'd see Carvajal and Mendy slightly थोड़ा सा up, not at their usual defensive positions. तो यही गेम प्लान था. You'd let Liverpool press you, and Courtois would have ball touches, and था भाई ball touches थे. So it was a great night यार. मतलब it clearly shows how clinical Real Madrid are. 3 chances, 4 chances में एक गोल मार दिया. It's Of definitely course. one of the best nights of my life, भाई. बिल्कुल यार. हाला मद्रिद. Absolutely. और वेदांत is taking leave, लेकिन वेदांत बात करेंगे यार ऑफ सीजन में काफी like we have to do a lot of content और people यार again do check out Madrid Pundits. सूर्यांश तो अभी बने रहे but definitely do check them out. वेदांत मिलते हैं. I am तो है. चलो bye. चलो. Subscribe to Almighty Blues if you all haven't already. ठीक है. I'll take a leave now. Bye. चलो मिलते हैं. टेक केयर यार. लेकिन हाँ एवरीवन यार सूर्यांश विल मेक श्योर यार आज तो मौका है बोलेंगे भाई. बोलना बनता भी है. आई वुड से दैट बोलना बनता है. आई वाज होपिंग उदय इज हियर नॉट टू काइंड ऑफ आर्ग्यू बट द फैक्ट इज देयर आर लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स. उसके पहले यार बिग अप टू बॉम्बे पिनिया बिग अप निकालनी है ना कि पीपल वर मेरे को जो मतलब कॉकीनेस से वो आया ना. I felt very wrong when Salah said कि I wanted Madrid in final and Jamie Carragher was like it was very easy for Liverpool to win it. तो वो चीजें ना that is making थोड़ा toxicity वो लाती हैं. बाकी चीजें कुछ नहीं. I love Sadio Mane's statement. He said it very nicely कि in 2018 they deserve to win, they won. Like we cannot change the past ना उससे. अगर change हो सकता है तो और चीजें change हो जाएं. तो वो चीजें that is how you deal with these kind of things. And of course Valverde तो bro is a workhorse. मतलब कितना भागता है ये. मैं Valverde के लिए नहीं डाला by the way यार again no pun intended लेकिन वो ये Virgil van Dijk what was he trying there? क्या कर क्या रहा है भाई वो. मतलब he is one of the best. मतलब मैं I will not be saying here कि Virgil van Dijk is not. बहुत लोग बोलते नहीं longevity नहीं है लेकिन I think let's be honest आज के दिन में if you want a center back pairing in the world you would pick Virgil van Dijk. ठीक है. He's that defender. लेकिन यार in that moment let's be honest Virgil van Dijk was he wasn't brave simply put. He should have closed down that cross. और I think he underestimated Sooryansh बोल सकते हो. Valverde being not a winger maybe underestimated. वही ना भैया that is what I am explaining हर एक को कि Van Dijk की हाँ यहाँ पे गलती है because you look at the position he is at. The only two things he can do right now is either block it with the back foot or it is going through. That is the only two options. You cannot do anything outside the box out of this. Or you can commit a foul and give them a penalty. That is how you are planning to do it. But what went wrong here is that Robertson wala thing. Because Trent is so vulnerable on one side, Robertson had to move his position and he had to come to the right flank. And that's where the problem started and this attack was successful. And we were able to score. I'll say that is what... Like because Valverde is like he's going to run. Agar you give him a free wheel, he'll continuously run. You cannot just block him like मतलब वैसे ना. He is like really मतलब good with वो. This is an interesting अनुराग. मतलब लेकिन मैंने कमेंट भी देखा जीतू भाई अगर आप फ्री हो तो आ जाओ भाई. मतलब I'm pretty sure all Real Madrid fans would like to express their feelings आज. मतलब you don't get such nights every year unless you are a Real Madrid fan, that is, which you are. But again, you know what I mean. Valverde is definitely going to be a Raul kind of figure that everyone loves, future captain. तो अनुराग बोल रहे Valverde is that kind of guy. But again, मैं तो argue करना चाहूँगा कि Valverde is terrific. I think Champions League games, big games के लिए he's your man. But I think for week in week out के लिए he's probably not your man. At least right now. That's just my argument looking at him from outside. लेकिन what about you, Sooryansh? Who's that captain figure? Like you have a lot of leaders अभी. लेकिन आप सब जानते हैं यार, there is a transition that's going to be happening 2 साल बाद में. तो who's that figure right now जो आप देखते हो future captain of Alaba is a solid player. Like Alaba तो he bleeds that वो captaincy वाला वो intent जो होता है. Like you can see him at the age of 19 he won 2013 का Champions League.
In 2020, he was one of the most crucial parts of Hansi Flick's system, and they won that 2020 ka Champions League. In 2021, he made Eder Militao look so well that Van Dijk and Konate in air were nullified. So I'll say he is the one. Rudiger captain तो नहीं बनेगा. I can assure you that Rudiger is very passionate, but वो जो sense होता है ना कि आपको टीम को motivate वो कर सकता है. You have to be calm as well. Alaba है ना, Alaba is very calm. Alaba जैसे Militao is ना, भैया I have to say it, Militao is very erratic in terms of his decision making, but Alaba on the other hand is very smart. तो Alaba ने उसको जैसे hold किया है ना, Militao was going on an ambitious run. Alaba ने पकड़ा उसे पीछे किया कि कहता कि पास कर play and pass. तो that way pressure जो build हो रहा था वो reduce करवा रहा था Alaba. So that is something जो आपको एक captainship वाली वो देती है vibes. So I'll say Alaba will be the next captain उस team में. He's just 28, so yeah, works. Yep. Well, let's see, Ashish. He's an option for sure. अब देखते हैं मतलब again with the Uruguayan team, what he does, because again वहाँ भी काफी important figure है in midfield. We have captaincy based on seniority. हाँ, मतलब that is something मैं देखा हूँ. तो देखते हैं मतलब you know I think कोर्टवा यार भाई साहब imagine कोर्टवा बन जाए कैप्टन. इकर कसियस part 2 already बहुत सारे memes आ रहे, tweets आ रहे. Not really for me. I don't think वो है calm mind जो ना सूर्यांश बोल रहे, मतलब he's great in what he does. Same with Rudiger, but I agree with him 100%. Based on number of years, absolutely. वही शाश्वत हम बात कर रहे थे. Carvajal and Lucas Vazquez fall. Lucas Vazquez भाई वो तो come on, he's just a squad player at best. Carvajal problem is वो हर एक गेम खेलते नहीं है, तो I doubt if you know they will give that captain armband to him. I agree. That's why Sooryansh भाई. Michael Owen still saying, "अरे भाई, so Ujjwal exactly man." My point is, I'm shocked because भाई the guy was actually a good Real Madrid player from what I remember in his days. It's just that Liverpool, you know, is still there in his veins. Lekin again, Liverpool fan Uday, I'm not sure if he is able to come in time. So हम last questions ले लेते हैं Sooryansh to finish the stream. क्या बोलते हो? We'll take a few questions. Sure. And okay, so I think okay, I just got a message from Uday. No problem. Maybe if you can join now, Uday, if you're watching, please do come on. I have shared the link already. So let's see if he's able to come any moment, because I would like to say, यार एक चीज मैं quickly पूछना चाहूंगा, even from an opposition point of view, were you surprised कि Luis Diaz was taken off, the first guy? I know थोड़ा fatigue but था. Luis Diaz was actually in Carvajal's pocket. Carvajal had the game of his season. मतलब it is the Carvajal who, मतलब I told everyone ना, people were like कि Madrid won't do this, that people were countering me on the fact कि Trent Alexander, Carvajal है दूसरी side, Luis Diaz खोल देगा. I was like, wait करो, Carvajal has been in 5 finals and he knows what to do. 4, to be very honest, 4. But the way he played, Danny Carvajal silenced Luis Diaz completely. The creativity on that side, Luis Diaz was just running in this game, to be very honest. There was no creativity from that side. So I'll say that it is something that has been there and it had been lacking. So I'll say Luis Diaz was nullified and Carvajal did मतलब outclass कर, very honest. Jitu bhai is actually saying that is about the first team debut. वही है मतलब in terms of hierarchy जो है Real Madrid follow it. लेकिन वही Carvajal, if he can continue, Jitu bhai and everyone in the chat, like on the form that he's shown last few weeks में. I remember Sevilla के साथ मैच था ना La Liga में, if I'm not wrong, वो लेफ्ट बैक खेला था और वहां से 2 असिस्ट निकाल के, तो भाई साहब मतलब क्वालिटी में तो आई थिंक no one has doubted him ever. It's just about that fitness. वो भी तो लड़ाई वो, हाँ उससे याद है, आप लोगों से पूछना है वो टेरी रियो का क्या सीन है वो मतलब अरे बहुत ही गंदा वाला सीन है. It shocks me sometimes यार. What happened is basically obviously John Terry had a racism row in the past, है ना, Anton Ferdinand के साथ में. मतलब again वो Terry was proven to be not guilty finally, ठीक है, तो it is settled, right? मतलब आप you have to take that, but Rio Ferdinand being Anton's brother never believes that. और first I think Terry की mistake थी, I would say that. हाँ, तो Rio Ferdinand ranked the top 5 defenders that he has I think played with, or no I think that he considers of all time maybe of Premier League I think. तो वहाँ पर number 1 पर खुद को लगा रखा, number 5 Terry रखा, और I think Virgil van Dijk was number 3. तो as in by stats and people who have actually watched the game always said it's basically John Terry, Ferdinand or Vidic. Let's be honest, those जो longevity है ना, Virgil van Dijk will get there. I'll say one more name,
which should have been there, और वो Stamp. Van Dijk ने रखा था. No, not Sam. It was Vincent Kompany. The kind of player Vincent Kompany is, तो वो तो मेरे हिसाब से वो नहीं Vincent नहीं Kompany. मतलब he's in with a shout, लेकिन अभी पॉइंट ये नहीं था. पॉइंट था यार, टेरी इज बाय फार देयर इन द टॉप 2-3 बाय फार. Of course. मैं ठीक है. I was shocked कि किसी ने टेरी को मतलब नंबर 5 पे कैसे रख सकते हैं यार. बिल्कुल John बिल्कुल. Terry ने तो नहीं वही है ना, तो defenders. बहुत ही कंट्रोवर्शियल है. तो जॉन टेरी, as much as people Chelsea fans love and adore him, मतलब literally John Terry is like a family member to Chelsea fans. मतलब I became a fanatic from just a fan because John Terry. मैं तो बोलता हूँ I was a huge Robin Zola fan, लेकिन when John Terry captained Chelsea, it was a different element altogether. लेकिन वही है, he made a mistake. वो क्या किया Twitter पे, he replied with all the stats and all that, saying that how can it be this, and keeping yourself as number one itself is basically too much. तो he went on saying that वही रेसिज्म का, so I even मैंने डाला तुझे टॉप 5 में, वही बहुत है. तो बहुत ही मतलब petty issues है. मतलब I don't kind of back that at all. I love John Terry. I respect John Terry because ना John Terry का Real Madrid के साथ always has been the good connection. John Terry ना in the past has always supported Madrid. तो उसका ना वो जो statement था ना कि कल he was amused कि कहता कि I तो don't understand this logic कि एक बंदा अगर पीछे तो offside कैसे दे सकते हो आप. मतलब एक बंदा पीछे होगा offside cancel. Why making like two things वाला, two defender ये वो, why add this? Keep it simple. Exactly. I agree 100%. और ये Modric extend कर लिया क्या contract? हाँ, he has extended for 1 year. अरे nice man, nice. He selected himself. That was a funny thing actually. लेकिन हाँ यार अर्पण, we My saw dad that is as well. everyone knows at the moment community में कि my dad is a United supporter. तो my dad was like कि मेरे लिए तो Vidic will always be number 1 क्योंकि Nemanja Vidic has done मतलब tremendous work for this team and मतलब in the past जहाँ पे people used to fear ना going in, Nemanja Vidic used to do that. हाँ, agreed. Manav Bagga, that's what I'm saying. कि Vincent Kompany will be in the elite defender वाली category and I respect him क्योंकि he was a true leader for Man City and वो तब आया था जब City पे पैसा नहीं आया था. तो हाँ, I'll say that. Yeah, or one more point is Vincent Kompany actually started off as a DM, just for people to know, right? Only would turn it into a proper centre half. Recent decade में Nitesh, I kind of would not disagree at all. Like for sure, I think Vincent Kompany and Virgil van Dijk दोनों ही बोलूँगा recent decade के लिए. लेकिन absolutely Stam or Vidic or Terry and Ferdinand definitely. तो ये 6 तो they stand out. लेकिन again coming to the questions यहाँ पर quickly. तो रितेश का तो हमने आंसर कर दिया है. बाय द वे रितेश, if you're still watching, भाई, I hope you've understood what we're trying to say here. Opinions on Salah in big games. मतलब again, he has had a bad year in finals in this season. Not great on the pitch. Up to the mark. जो initial Salah खेल रहा था, you expected a lot from him. And of course, when you start the season like scoring goals and goals and goals, people expect a lot. But after that AFCON वाला defeat, मतलब there has been a decline in his performance. Correct. और ये मानव again काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Matrata United also told about we celebrating defensive football. Like again मैं तो उस पर ही जा रहा है. This is a way. मतलब if you actually watch the Italian team, the Italian team of 2006, the Italian team of 1994, Italian team of Antonio Conte, ठीक है, they had a certain way और उनका वही था not concede वाला जो एक norm था, that actually worked a lot. और especially for tournament football, that is part of football, that is a tactic. देखो football, if it was all about basically scoring goals, then जैसे सूर्यांश ने बोला ना, add one more rule भाई, why have offside? You just have goals galore. तो 5-a-side football, beach football versus proper football में difference क्या है? Difference ये है भाई, मतलब I didn't understand tactical battle. वो ना वो बहुत ही stupid वो है, मतलब take on it कि 2 बंदे चाहिए आपको डिफेंस में. अरे what the hell bro, what the hell. अगर आपका एक बंदा पीछे है डिफेंडर गोलकीपर के, तो टेक्निकली तो वो पीछे ही है, he is acting as a goalkeeper अब, तो वो तो गोल होना ही चाहिए. मतलब I don't understand, बहुत stupid logic बनाती है मतलब कभी-कभी कमेटी. यानी स्टर्लिंग का क्या लग रहा है? स्टर्लिंग आएगा भैया, मरना थोड़ना है. अगर ये ले लिया तो फिर हो ही जाए. मतलब इट विल बी द बिगेस्ट मतलब डेफिनेटली. इससे तो बेटर विनीशियस से खिला दें. Matrata United, why was Ramos treated badly then? I think he was treated badly by PSG fans. I don't remember Real Madrid fans treating him badly. We used to love him यार. हाँ, मतलब and even opposition मैं बोलता हूँ ये, we were talking about Rudiger ना, तो Rudiger is your rowdy in the team. Ramos was that.
रूडिगर हैज एक उसने इंटरव्यू में भी ये कहा था कि you see Ramos and you learn from him, even though he is the bully in the team, but the way he manages the team ना, it's something you have to compliment. तो वो चीजें भी आप देखते हो मतलब उस केस में. बिल्कुल बिल्कुल. सुपर टॉमी टुकल बाय द वे, यार बढ़िया है, आप आते हो हमेशा. एंड यस, चेल्सी फैंस पुट इन अ क्वेश्चन बिकॉज यस वी हैव सेलिब्रेटेड आवर 1 year anniversary as well along with Real Madrid victory. यहाँ पर Uday, I'm not sure if he is coming on. Let's see, as in I did send him a link but looks like he's still sleepy. It's a different time zone, तो यार हो सकता है. Anyway, ड्रीम साइनिंग्स यार, मैंने तो वही बताया कल, वही कुलदीप से भाई से बात हो रही थी यार. नेमार टू चेल्सी, आई नो इट्स अ ड्रीम एज वेल. नहीं होने वाला है प्रीमियर लीग. बहुत स्टूपिड ट्रांसफर बहुत होगा. स्टूपिड है. नहीं लेकिन मेरा लॉजिक है, मेरा लॉजिक है. नहीं मेरा लॉजिक ये है यार, देखो द फैक्ट इज, हाँ प्रीमियर लीग में कोई भी क्लब जाए तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ वे टू रिस्की ऑप्शन विद हिज बैगेज. लेकिन वो ये, ही हैज प्लेड फॉर टुकल और ही हैज गॉन रिकॉर्ड सेइंग दैट मैं टुकल के लिए जान दे सकता हूं. ही हैज एक्चुअली सेड, ठीक है. आप देखो तो चैंपियंस लीग जो रन था पीएसजी का, आई थिंक नेमार इन दैट टीम वाज वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स फॉर श्योर. और हमें विंगर्स हु कैन नॉट फिनिश इज एन इशू. नॉट दैट नेमार बहुत ही अच्छा है, लेकिन वही है, ही विंस योर फॉल्स, ही विंस अ लॉट मोर थिंग्स कंपेयर्ड टू जो है. तो इट्स सर्टेनली अ ह्यूज अपग्रेड. सेकेंडली, अभी वो 31 है. वी आर लैकिंग सीनियरिटी इन द टीम जनरली. इतने सारे जो सीनियर मेंबर्स चले गए ना, जनरली सीनियरिटी इन फुटबॉल वी आर लैकिंग दैट. तो आई वुड से देयर आर 2-3 रीजंस कंपेयर्ड टू मे बी अ क्रिस्टोफर एनकुकू. तो आई वुड से मतलब अगेन स्टर्लिंग नो बोल रहे थे ना सूर्यांश फॉर मी. आई डोंट माइंड द स्टर्लिंग, आई डोंट माइंड द नेमार, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. आई नो मैं आपको ना मेरे हिसाब से जो चेल्सी साइन करेंगी ना, मतलब मेरे जो दिमाग में घूम रहा था, क्योंकि आई वाज थिंकिंग अबाउट इट. सबसे पहले तो यू विल साइन जूल्स कुंडे. मेरे हिसाब से ही शुड बी नंबर 1. मतलब आपको कोई अटैकर देखना नहीं है, यू हैव टू साइन जूल्स कुंडे. यू ब्रिंग जूल्स कुंडे और पाउ टोरेस, आइदर वन ऑफ देम यू हैव टू. पाउ टोरेस तो मैं खुद बोला हूं, राइट. क्योंकि पाउ टोरेस इज एक्सेप्शनल एज अ डिफेंडर यार. ही इज एक्सेप्शनल. मतलब आई विल से जूल्स कुंडे, मतलब इन माय ओपिनियन टुकल प्रेफर्स जूल्स कुंडे मोर. तो यार हाँ, लेकिन वो ये he plays with the ball, he's very good with the ball and kick out the likes of Malangsar from this team. What an shit उसको तो player काउंट he नहीं is. कर रहे, उसको तो मतलब काउंट नहीं इतना कर रहे. गंदा प्लेयर है मलंगसार. मतलब उसको तो आई डोंट थिंक वो न्यूकासल के लिए भी स्टार्ट करेगा. मतलब इतना गंदा है वो. A question for Real Madrid fans here going to the next season: what are your expectations from Real Madrid? Are the favorites to win the UCL next season? Or do you think there's still room for improvement? Anshu Bora, I'll say that there is scope of improvement every time, and currently our squad is not complete. We are supposed to get players, and eventually, if we do, I hope we win the UCL next season. Because यार we are the best team in Europe, so हाला मद्रिद why not the match. बोलो यार, अभी वही लास्ट एक साल के लिए मैं बोल रहा था. नहीं बट वो नहीं, वो मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि अभी का, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री वाइज ना. तो अब हिस्ट्री वाइज तो लाइक 14 बारी तो इट्स लाइक क्रेजी. द नेक्स्ट टीम व्हिच कम्स इज 7. तो मतलब अगर कोई टीम अगर आज से 50 साल बाद अगर हम कुछ जीतते नहीं है, प्रोवाइडेड हम नहीं जीतते, तो ही वो आगे निकल सकती है कोई हमसे टीम. तो वैसा वाला है. I wasn't saying defensive football, Ankit bhai. Chelsea and Real both are pragmatic. हाँ वही, there's a difference between the two, absolutely. भाई वही है, Conte का example दूंगा. Conte is probably I think more pragmatic versus Mourinho. Conte से याद है, Londoners के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है. Spurs are looking deadly. Perisic आ रहा है वहाँ पे. I think Conte ने खेला है तो मतलब lot of Spurs fan troll कर रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है भाई. मतलब he has played for Conte, तो मतलब there's a reason why he's going there. और वहाँ पर he'll probably get starting minutes. Chelsea में he'll not get starting minutes. वो जो इन्होंने यूएस से साइन किया, he has been a banger of a signing. मतलब लोग लुइस डियाज को देखते हैं, उसको देखते नहीं है. He has scored goals. वो सिटी के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला है. जो भी गेम्स जो खेला है, he has been good. और वो फिर आर्सेनल ने तो फिर आर्सेनल वाला काम कर ही दिया. मतलब हैट्स ऑफ टू आर्सेनल. मतलब इतने, मतलब you had one job. You had to just draw with Newcastle. You could have gotten that UCL वाला जो ड्रीम है तुम्हारा. भाई नहीं, अब चलो वेट करो एक और साल. और I personally think teams are changing. मतलब United can also improve, and Spurs, in my opinion, is a top 4 team at the moment. Yep, I would not disagree there. मतलब again talking about that, मतलब again congratulations to Real Madrid, congratulations to Liverpool. हाँ, हम काफी Liverpool के talk नहीं किए because we didn't have a Liverpool fan था जो हम expect कर रहे थे. But let's see, as in if he's able to come in last minutes के लिए भी be great. But anyway,
क्विकली मैं बोलना चाहूंगा एज अ चेल्सी फैन वुड लाइक टू गेट टू दैट लेवल अगेन. काफी मुश्किल है. नो, रियल मैड्रिड तो ब्रिलियंट है, लेकिन मैं चाहूंगा यार, मतलब अगेन चुआमेनी आप लोग ने ले लिया है, मतलब इट इज इनएविटेबल, होने वाला है. हम चाहेंगे यार अब तो डेक्लन राइस भैया ऐसा भी. मत बोलो, बहुत दुख होता है वो इनएविटेबल वाला जो हुआ ट्रांसफर था, सुन के। एग्जैक्टली, वो स्पेशली तो उसके बाद. उसका नाम नहीं वो लेना, जो ही इज समवन यू शुड नेम, द वन I वी have शुड learned that. I have learned that in the last stream as well. एम पेपाल Absolutely. एम पेपाल ब्रो. अरे Ralph is leaving United as a consultant also. आई डोंट थिंक सो, कुछ ऐसा तो आया नहीं है, मैंने अभी पार्ट तक पढ़ा टाइम करा था ना 2 दिन ऐसे कुछ. नहीं. उनका बोल तो रहे हैं. अच्छा, एक सेकंड, आई हैव टू चेक. हाँ, कंफर्म हो गया, वो जा रहा है उधर ऑस्ट्रियन टीम के लिए. यार अरे यार भाई यार, राहुल त्रिवेदी यार, बिग अप. यार मैं बोला, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में आप बोल रहे हो अबाउट पैनल. भाई व्हाई वुड आई गेट अ मैन सिटी फैन इन अ लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग फाइनल विन? सो I love all my community people, and all the community people love me, and they know that I'm in touch, and they know that I keep inviting. So please do not judge on people that are coming on the panel who are not coming. हम लिटरली हर एक पैनल के साथ टच में और बुलाते रहते हैं. इट्स अबाउट देयर अवेलेबिलिटी एज वेल. तो बिकॉज आप बहुत बार डालते हो ना चैट में, तो बाकी लोग सोचते हो समथिंग रॉन्ग. जैसे बहुत बार लोग बोले मोहक भाई को क्यों नहीं बुलाते. भाई मुझे मालूम है कितना बुलाता हूँ, कितना बात होता है, उनसे इतना हेल्प मिलता है. तो सेम गोज विद प्रणय और एनीवन थिंग. और टॉकिंग अबाउट लाइक्स, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार. इफ नॉट फॉर मॉड वी वुडंट हैव इवन गॉट टू दिस स्टेज. सो थैंक्स अ लॉट. The reason that we keep higher like target is because I believe it's still low. क्योंकि यार हमें मिलते हैं व्यूज, तो यार 400 लाइक्स बहुत ही कम होते हैं व्यूज के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. सो एवरीवन, प्रीटी श्योर आप लोग सब लाइक करते हो. मैं खुद देखता हूँ बहुत चैनल्स, मैं भूल जाता हूँ लाइक करना, मैं भूल जाता हूँ सब्सक्राइब करना. तो यार इट करा इज करो माय ड्यूटी भाई. टू डू इट. वो नहीं है ना, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर आई लाइक टू से कि आप लोगों का सपोर्ट इज क्वाइट एविडेंट व्हेन यू कम टू लाइव स्ट्रीम्स एंड ऑल. जब आप लाइक करते हो तो वो और एविडेंट हो जाता है, एंड इट गिव्स अस मोर मोटिवेशन टू गिव यू गुड कंटेंट इवन दो. तो मतलब आई लव बिल्कुल इट. बिल्कुल बट नेमार बिल्कुल. वाले का ना भैया, आई गिव वन कॉन उसका, कि नेमार आते हैं ना वो आपके टीम में ना, वो आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी, वो जो कोशेंट वगैरह है ना. और नेमार बहुत अलग टेंजेंट पे चलता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ नेमार जो पहले बारसा वाला था जो बहुत ही फाड़ था. वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेमार जो अब बहुत ही मतलब यूजलेस हो रखा है. तो आई विल से दैट. अच्छा ये क्या है यार, थंबनेल ही मैड्रिड बायस्ड है. यो लिवरपूल फैंस थोड़ी आएंगे अंकित भैया. भाई रियल मैड्रिड हैव वन द 14th चैंपियंस लीग. गिरी भाई, मतलब जस्ट टू रिमाइंड यू, यू नो इट वेरी वेल. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट बीइंग बायस्ड. इट विल बी अनफेयर फॉर मी to put Virgil van Dijk's picture on the thumbnail crying. That is actually Liverpool fans पर बहुत मतलब गाली पड़ेगी मुझे. यार You know what I mean? लिवरपूल फैंस, मतलब हम लोगों ने अभी तक कोई एक ऐसी स्टेटमेंट निकाली नहीं है मैड्रिड ने जो आप लोगों के लिए बहुत गलत हो. वी आर रिस्पेक्टिंग द फैक्ट दैट यू रीच द चैंपियंस लीग फाइनल. ठीक है, तो आई से कि भैया ने कुछ गलत नहीं किया. एंड द थंबनेल इज रियल गुड. मतलब अगर आप एडिटिंग वगैरह के पर्सपेक्टिव से देखो, इट्स अ वेरी नाइस थंबनेल. नहीं, द थिंग इज यार, हम तो सेलिब्रेट करते हैं भाई. इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. और इट पेन्स मी. थिंक अबाउट इट गिरी भाई एंड एवरीवन हु थिंक दैट वी आर बायस्ड. नहीं, इट पेन्स मी यार. मैं I am part of Chelsea. I am following Chelsea from 22 years. I'm literally meaning every game, ठीक है, every minute. तो imagine losing that second Champions League crown, and we have got only 2 Champions Leagues, right? And that is a great achievement for us. मैं तो बोलता हूँ. तो some club जो 14 बार जीती है, 5 times, why won't we celebrate it? I think they deserve it. They deserve the मतलब front page newspaper का रहना चाहिए at least for today. एक दिन ही बोल रहा हूँ, probably Madrid fans तो बोलेंगे पूरे साल के लिए होना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आज के दिन दे डिजर्व इट. और इसलिए मैं सोचा यार मैं आ सकता था एक छोटे से वीडियो के साथ कि यार ये है, ये मेरे थॉट्स है. भाई इट वोंट रियली डू नहीं जस्टिस. भैया, बट ये ना फिर जस्टिस नहीं होता दोनों टीम्स के लिए. मतलब बिल्कुल. गिवन वी हैव टू गिव क्रेडिट टू बोथ द टीम्स. लाइक ऑफ कोर्स मैड्रिड को तो मैं ज्यादा क्रेडिट दूंगा, सॉरी, बट हाँ मतलब उस केस में वैसा है. फैक्ट है. और ऑनेस्टली यार, अगेन वी वांटेड बोथ द पर्सपेक्टिव्स और भी. और जैसे उदय का दूसरे टाइम जोन में, ही वाजंट एबल टू कम. होपफुली हम लाएंगे यार. मतलब पीपल हु फॉलो रेगुलरली नो व्हाट आई एम सेइंग अबाउट दैट. लेकिन यहाँ पर यार शेयर भी कर देते, पीपल हु जॉइन लेट माइट हैव मिस्ड दिस न्यूज़ टॉकिंग अबाउट लिवरपूल. नहीं तो बोलेंगे यार वापस बायस्ड है हम. ये है आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग फेब्रिशियो रोमानो का ट्वीट जो पीपल आर आस्किंग. मैंने कहा कंफर्म्ड हो गया है, इट्स कंफर्म्ड. तो इट इज कंफर्म्ड, राइट? पता है पहले बोल रहे थे ना बायर्न इज द ओनली कंटेंडर. इसमें देखो इसने लिखा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स. दैट मींस द अदर टीम्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस ट्रांसफर. दैट इज लाइक 100% ही इज नॉट गोइंग टू बायर्न म्यूनिख. बट आई डोंट थिंक ही इज साइनिंग विद एनी इंग्लिश साइड पर से. तो लेट्स सी, अगर बायर्न जाता है तो बायर्न से नाबरी तो निकल रहा है फिर. इट्स
आई गेस रिप्लेसिंग नाबरी वाला साइनिंग होगा ये पक्का, साडियो माने को। देखते हैं, मतलब मुझे तो लग रहा है ही कैन बी अ ग्रेट फिट, और मैंने तो बोला यार ही कैन एक्चुअली ही इज इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ बाय प्लेइंग नंबर 9 भी खेल सकता है अभी, so that's the difference. But again यार, I know बहुत लोग हैं, and let's target the likes that I'm actually putting on screen, but do not forget to subscribe to Madrid Pundits and both our channels, because हम live है in just a few hours on, I think literally couple of hours on Almighty Sports Plus, cricket final भी है. So congratulations Sooryansh और Madrid fans. Till next time, take care. Have a good night.